क्रिटिकल एंगल, कैश फ्लो और ये वो सब चीजें भी जो है ना वो डिटेल्स में दे रहा हूँ, उससे आप इजी होगा। आप अगर दूसरी थेरेपी भी दे सकते हैं पैरेलली, तो मल्टी स्ट्रॉन्ग अटैक होने से अच्छा है, क्योंकि ये खासकर मेंटल हेल्थ में क्या होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं। अब जैसे एंग्जाइटी किसमें नहीं है, जितने भी बीमारी देखो सब में एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन सब में होगा, तो मल्टी इंक्लूडिंग सर एक सजेशन है, जो बात करे वो ही माइक चालू रखे, बाकी सारे बंद करे, तभी सारे कुछ सुन पाएंगे, वरना बहुत डिस्टर्बेंस है सर। सर आपका शायद 2 फोन से आपने लॉगिन किया है ना, तो इसीलिए भी आवाज ये हो रही है। अच्छा, आई थिंक वो एको हो रहा है आवाज। अभी अभी नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो शट ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। वो डबल लॉगिंग था ना, एक्चुअली दिक्कत हो रही, तो मेरी आवाज वो भी कैच करके आ रहा था। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। हाँ बरवे जी कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं, आप वही बुक के बारे में बात किया। हाँ जी हाँ जी, ये बुक तो ये अल्टीमेट एम यही है। देखिए इस प्रोग्राम से कुछ सच मॉनिटरिंग बेनिफिट तो होता नहीं, क्योंकि 4-5 लोग से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और मेरी मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। तो अल्टीमेटली आई एम लुकिंग फॉर द कंपाइलिंग दिस इन अ मोर प्रोफेशनल एंड मोर होलिस्टिक वे। ग्राफोलॉजी भी रहेगी, इवन मेरे प्रोग्राम में भी आप देखिए जैसे 60-70 पेज रहते हैं, उसमें तो मेरे हर पेज में 2 या 4 लाइन ही रहती है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन एंड बाकी जो वैलिडेट जो ट्रेड्स होते हैं, जो इनपुट होते हैं, रिसोर्स होते हैं, मैं उसको उससे रिलेट करता हूँ। तो ग्राफोलॉजी एज सच मैं वैसे कुछ फिलोसफिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो ऑलरेडी है, जो डॉट्स इंफॉर्मेशन चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ खाली। बट ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मेरे को जब मैं सिग्नेचर्स वगैरह लेता हूँ तो 2000-3000 मिनिमम सिग्नेचर्स से मैं ये इस पर डाउनलोड करता हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा प्रोफेशनल और हर प्रोफेशन का एक एक लिया, नहीं अदरवाइज क्या टीवी एंड फिल्म के बहुत ज़्यादा आ जाते थे, बाकी फील्ड्स के नहीं आते थे। तो अभी बहुत सारे फील्ड्स को मैंने आइडेंटिफाई किया, और उसमें फिर एक बंदे के जो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस हैं, कैंसर के हो या क्रिमिनल के हो या किसी के हो, तो वो सब भी ले लिया मैंने। रादर देन पहले मैं एक ही लेता था, उसका जो गुड फेस का था, हेल्दी सिग्नेचर था, उसको एनालाइज करता था। अभी मैं उससे आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा सा, अभी मैं उसके जो बैड फेस था वो भी ले रहा हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी, क्योंकि कोई बंदा आपको जो मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है वो गुड फेस हेल्दी फेस में मिले, खराब फेस में भी मिल सकता है, बट उसके भी अच्छे फेस होंगे, दिन अच्छे होंगे, तो दैट इज व्हाट इट मेक्स यू गुड नो जजमेंट, कि कोई बंदा अच्छा खराब होता नहीं, इट इज सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट एंड द चॉइसेस व्हिच इंडिविजुअल मेक्स। तो सेम सिग्नेचर इज हेल्दी, बट सेम सिग्नेचर हैज अ नेगेटिव ट्रेट्स आल्सो, सो यू कैन फाइन ट्यून, बहुत बारीक नजर हो जाएगी आपको। नहीं तो पहले ऐसा होता है कि अच्छे सिग्नेचर हो गया, एक खराब सिग्नेचर हो गया, इट इज दैट डिवाइड, वो डिवाइड ठीक नहीं है, इट इज ऑल सब्जेक्टिव। ओके, अभी और कौन आ गया भाई? ठीक है, दूसरे आ गए। आई थिंक अब चालू करना चाहिए, 7-9 हो गए, अभी चालू करना है, अब चालू करते हैं। हाँ सर चालू करिए। चालू करते हैं। यस सर।
So, friends, welcome to the signature series with letter A. My screen is visible to everybody. हाँ यस सर Yes, विजिबल है। sir. Yes, sir. So basically, all the linear structures are there, and the more emphasis is on the horizontal direction and rightward. So that is the basically towards the society. So the stem is basically self, and the horizontal three lines are basically for the outer society. So this is the letter which tells about your concern and relation, how you relate directly, and it is because all the lines are linear. It means more active and uh, more active, direct, and having more. Otherwise, if you see, it is a more masculine sort of thing. It is direct communication with no tidbits and everything. But small letter is, if you see, small letter is a totally circle. Small e is basically, if you see, it is a circle means it is a feminine traits. It takes care, and E is formed with the letter C and small circle at the top, which is a combination of letter C is basically social concern. Then top is a combination is music, response, cultural calmness, personal no, and thoughtful communication. So communication and social thing. So towards a society. So this is what the letter E is basically comprising. Gap at the upper loop. If you see here, letter when this letter E stroke goes left side, crosses the left hand side. It means gap at the upper loop tells about the inability to communicate because that fellow is going to the past, linking to the past, so he is not able to link with the present and future. So there is a communication gap if this type of letter is there. When the letter has a top crossing on the left side, it is a argumentative. It is not horizontal, it is like a 45 degree. When the letter has a block, and this type of letter which is having not a circular, but it is going down more vertical sort of thing. So it is for a childhood restriction, difficulty in expressing emotion because there is a circular thing, feminine traits are not there. So is more direct, but there is a restriction of expressions. And the letter E is one minute. Yeah, okay. Someone has joined. So when letter E is more horizontal and the area on the top is minimal, then it indicates the slip disk. Okay. Slip disk lower and pain at lower back and the acidic indigestion. This is the letter E is considered to be the this is the one way of looking at the E for the personality traits. The health. Another point is letter E is also represents the ear. If you see our ear's shape is also like that same thing. So it represents ear. So when that E is very open, it means the fellow is a good listener. When the E is a squeezed, and it means that fellow is a very selective listener. So this is the small letter E.
when the large stroke E, when E is a very large, reaching to the top and over, below and left side, this denotes that the person has a bad habit of distorting and facts and thus pointing the wrong and confused picture. So whenever there is a overdo is a negative thing. So when something is become going beyond the limit, it is a negative effect. It is a very standard graphological principle. Whenever you see something is going beyond certain limits, it is negative. Here this letter E, basically if you see the letter E has gone to the top and the loop is become more or less vertical sort of thing. And it ends with the left hand side downside. So it means the person has a tendency to completely twist the real original facts and the person cannot be twisted. So these are the small E letters which I have given something extra because small letter also has a significance in the letters and it cannot be when we analyze in signature normally the capital letters are only we are stressed upon. So uh, this time I have taken the smaller case also so that it will become more complete and holistic thing. So the letter E is basically key symbolism of personality traits. If you see the first letter, which is having a bottom stroke extended, it is a vein. It is a the person is a very energetic and negative emotions. He is a troubled sort of thing. In the second, if you see the letter, it becomes more vertical and squeezed. दुबला and thin हो जाता है. Then it is that shows the isolated, reserved, and shy. And the same E is a round without any circle in loop in center. It is a more feminine, caring, sharing, warm, and aesthetic. So because the curve here it is a pure curve, and here if you see it is a pure linear. So linear represents masculine and circular represents feminine traits. Feminine is nothing but caring, sharing. Yin Yang या जिसको अर्धनारीश्वर हम बोलते हैं ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है. तो if you irrespective of your physical sex, how person behaves, it is a caring, sharing or direct, irrespective of his gender, you can make out the person's behavior, how he behaves. He behaves like a man in woman or woman in man sort of thing. And that percentage, and based on the linearity and circular, you can have the idea of how much he is having caring and how much he is having the aggressiveness or caring and controlling the things. The balance E here, if you see the pointed I have seen, so it is a cultural, direct and literate. But when this E becomes like an angular stroke, it means there is a stress and quick stress, and this fellow is a clever to cut the things, to take advantages, and he knows where to cut the and how to squeeze and how much to squeeze to the maximum. So this fellow is like that. But here if you see the upper circle is bigger with the initial strokes. सर लिखा क्या हुआ था? ग्रैंड रियलिटी. हाँ मैं बता. Quick, stress and clever. Here if you see has a link with the ground reality because this it is a round curved strokes and the connection from the bottom. So it means that fellow has a good ground realities and controls of the fact and resources on those things. So this is the ground realities and ambitions. Ambition because it is going above in the upper zone.
upper zone represents your mind, your emotions, your visions, and all those things. So both things are there here in this letter E. Okay, this type of letter, if you see, will come to the signature analysis. We'll find so many variety of this in actors and writers. This type of E you will find that very common. Here it is just like this E is basically quick, fast, observer, restricted. It is a no, more. It has not lost the curve, but it is going towards the linear sort of thing. So, but he is not able to reach the linear because of the middle joint. So still it is a caring sharing, but it is a very fast, quick observer, restricted but helping, but restrict help. He will help, but there will be restriction because he thinks a lot. He has a lot of choice because of the thinner things. So everything governed by that. Here, if you see this E letter, it is similar to this. The only thing, the upper zone compromises and the strokes from the bottom, it will come from the more middle sort of thing. So it is the emphasis on presentation, the present in the middle zone. So he is having more stress on presentation, how you present the things. And this E, if you see, there is a sudden change in direction this fellow has diverted the joint. He is not making loop, or rather he is not making a point, but he makes the smaller parabolic loop sort of thing. So parabolic loop, wherever it comes, it is related to your libido related efforts and actions. So, and it is because it is a negative, so it is a perversion basically. Then if you go here, the letter E is same. If you see the letter E from here without any top, here it is the top is connected with the towards the bottom. Here it is in the middle. Here it is in on the bottom. It ends in the up in the upper zone only. So, but because of the it is ending in the upper zone, so it is the inquisitiveness. But because of the hook is a negative trait. So because of hook, it the traits has a flavor of high greed for wealth and material things. Okay. And Sir, one doubt. Sir, upper zone में hook आ रहा है, तो how will it speak about greed of material things? Same thing for me, sir. yeah, So you're not audible. actually, hook and flourishment, there is a very small differences there. If there is when the direction becomes opposite in the loop, then it becomes hook. Before that, it is a flourishment. So it is a positive sign. But when the in a loop, the direction is not opposite. At that point, it is a positive trait. When it becomes a hook, the directions of goes in opposite direction in the loop, then it becomes a negative thing. नो सर, मुझे बोलना था कि ये ऊपर लूप है तो नॉलेज के लिए ग्रिड हो, ऐसा नहीं हो सकता सर? सर अपर जोन में है ना, इसलिए। पर ठीक है, बट आपका जो लोअर जोन में भी है, इसमें इस पर्टिकुलर इसमें आप देखेंगे ई में तो जो लोअर जोन में भी हुक बना हुआ है. तो it has a, because whatever you are thinking, it is linked. The lower zone emphasis is there, but it is definitely guided by the negative thoughts of acquisition. So acquisitions, but here if you see, Sir, it can be fame.
Like if you don't have any talent, then too you have a greed of getting a name and a fame. It can be linked to that. Yes, yes, it can be. Greed of getting a name, even if you don't have quality, but getting a false Yeah, yeah, recognition somewhere. right. And I can relate it with an example. I have one of my colleagues' signature is like that only. Yeah, yeah. Yeah, So yeah. she is Example. not eligible for post, but she shows that she's eligible for false greed of getting a name. Yes, this greed is basically maybe intellectual, maybe material, both. It depends on the other factors. We have to see other letters also, but this is the greed basically. Greed for normally in modern days and all, it is whatever stress and accusativeness is there, it is more for the material things. When it is highly spiritual and also, then there is a hook is not there. So the intellectual things, what Bijal's thinking is not that way applicable. It looks like, but it doesn't apply here. Okay, sir. Thank you. Okay. And the middle bar of E is extended. It means the fellow is cautious. He wants to cover up the things like a shed sort of thing. So E is moving further beyond the limits of his formation. सर एक बार एग्जाम्पल बताएंगे क्या कॉशियस का फिर से? कॉशियस का जो मिडिल बार है ना, मिडिल बार लंबा जा रहा है, तो कोई भी एनीथिंग इज ओवर डू इज अ नेगेटिव एंड मिडिल बार इज प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल, लिविंग इन द प्रेजेंट, हाइडिंग टेंडेंसी हो जाएगा ना. लिंक. ओके, द ट्रेड्स कम्स जस्ट लाइक दैट. So normally that's why I am conducting the program. Because we should not copy paste. We should do the logic how this state is derived. We should not blindly rectification करके करना, ऐसा नहीं. And I am open. Still I am open because there may be another view or there may be another perspective to strokes. Because actually everything boils down to the strokes. Okay. Here now, if you go to another E, which is having a loop, again in upper zone there is a loop and there is a smaller loop also. So that fellow is sensitive about very small things. They very aggressive sort of thing. He doesn't compromise and all because there is a hook as well as a small circle. So it is very difficult for him to compromise certain things. So these fellows are very, very sensitive. Whatever they want, they will be stick to that very aggressively. And here, if you see in the last E left and left down side, it is a unnecessarily circular things, which is jarring eyes and again making the loops, hooks, and too many hooks. So these two hooks are again because of negative traits. So it is a vulgar ost- ostentations. Okay. And same thing, if it is reduced here, so it is a ego and greed because he is not vulgar, but he is a little superior than this inferior one. And when this letter E has a re-strokes and linear downwards and double stroke on the top, it becomes a neurotic because upper zone and it has a link with the grounds. Both things are there, so it becomes a neurotic person. सर न्यूरोटिक का मतलब? Neurotic means जिसका कभी भी बिहेवियर, कभी भी उसका अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, वैसे वो neurotic. सर एक बार फर्स्ट वाले का बता दीजिए जिसमें वेन लिखा हुआ है. हाँ, वेन क्या है बेसिकली, ये लोअर जोन में है, लोअर जोन में एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे. तो लोअर जोन में क्या होता है, लोअर जोन जो वेन है मीन्स इट इज अ फिजिकल पेन सॉर्ट ऑफ थिंग.
मतलब सर बिहेवियर क्या होगा वैसे ये Vain means that fellow is aggressive. He will be, maybe hiding and working very fast. He's putting efforts, physical efforts, or very aggressive in physical effort, making the physical things. ओके Okay. Okay. सर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी डिसजॉइंट हो तो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा क्या? एक बार बोले, फिर से बोले। कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो स्टेम से अलग हो। हाँ, तो जो स्टेम हाँ वो आगे बताएंगे, हम चल रहा है। जो वर्टिकल स्टेम है सेल्फ है, ठीक है। जो एक लाइन खींच रहे हैं वो आप खुद हो, और उससे अगर कनेक्टेड है तो मतलब आप एनवायरनमेंट से, सोशल से कनेक्ट हुए। अगर आप वहाँ गैप आ गया तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन यू एंड द सोसाइटी, और वो जिस जोन में जहाँ कनेक्ट होगा तो उसके हिसाब से वो चीज, वो फ्लेवर आएगा उसमें। फिर इंटेलेक्चुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है, ठीक है ना। मुझे लास्ट लाइन का जो फर्स्ट ई है ना वो बताइए ना, वल्गर ऑस्ट्रेशंस वाला। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, वल्गर क्यों होता है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बता रहा था, वल्गर क्यों होगा, क्योंकि वल्गर जो होता है नेगेटिव ट्रेट्स, इसमें आप देखें जो इस ई में हुक बन रहा है ना, आपको ऊपर एंड नीचे दो हुक ले गया, हुक के बाद फिर वो एक छोटा सा सर्कल भी और बना दिया, तो जो छोटा सर्कल है वो पॉजेसिव है एंड हुक साथ में, दो चीज साथ में, और ये अगेन रिपीट हो रही है। इवन मिडिल जोन में भी वही चीज कॉपी की है। तो मतलब दिस फेलो इज अ फुल ऑफ नेगेटिव एंड फिजिकल एंड लिबिडो ड्रिवन थिंग्स, ही थिंक्स दैट वे ओनली। गंदी सोच जिसको बोला जाएगा, गंदी मानसिकता वाला है ये, हमेशा इसके दिमाग में सेक्स और बाकी चीजें रहेंगी, बाकी और कुछ भी नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू। हिस्ट्री एंड सिंबलिज्म इट इज उसको हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे, क्योंकि ये मैंने किसी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा मटेरियल जो कि मेरे को मिलता जुलता लग रहा था। तो इसमें मैं सेलेक्टिव पॉइंट लूँगा जो मैंने, अच्छा, इज ईदर लेटर विच स्पीक्स अबाउट दिस सोल, because it is more about the social rather than self इसमें कम है, क्योंकि कैपिटल ई में आप देखेंगे तो सेल्फ जो वर्टिकल स्टेम है वो, उसका अगर 4 लाइन है तो एक लाइन यही है, तो अगर 4 में बोलो तो 25% सेल्फ है, बाकी 75% एक्सटर्नल सोर्सेज है। तो दैट इज इट इज अबाउट द सोसाइटी एंड एवरीथिंग। सो दिस इज टेल्स मोर अबाउट द सोल एंड टुवर्ड द सोसाइटी। It stands for 5 senses also. As a creative mind, because he is believe in doing the things rather than explaining the things and enjoying. He takes the pain to create. So it is a creative mind. Negative E's are irreliable and superficial, and they think out of box. Actually, again, if you see, they think out of box because their self is less, and the purpose for society is giving is more, so they try to do outside thinking, outthink outside box. Again, now this is what you are asking, it is here. The vertical stem line is basically, if you see the how E is formed basically with the one vertical and 3 horizontal lines. So this vertical line is basically represents in the विबग्योर, इट इज 7 चक्रा मेथड। चक्रा सिस्टम में आप देखेंगे तो विबग्योर को इस टाइप से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इनके जो ट्रेड्स हैं बेसिकली, ये ट्रेड्स इसमें आपकी पर्सनालिटी में है, और ये किस ट्रेड में आप टच कर रहे हैं वो आपको उससे पता लगेगा। जो बीच का जो ई है या बी है, जैसे यहाँ बीच में सपोज ये बीच में है या ऊपर तरफ है या नीचे तरफ है,
बेस्ड ऑन दिस कलर्स इसके जो ट्रेड्स हैं वो वेरी हुए, ठीक है। So if you see this in the one means blue. Here, if you see the blue is basically violent voice out opinion, cold vibe and logical debate. If you see the point two, which is coming to the yellow region, so the two represents is the daily life code because it is in more on the below the middle zone and the lower zone. So it is the happiness, daily life, and so it represents those traits in a person. Okay. And letter three, which is in center, it is in the green chakra. It is in a green. It means a emotionally warm person, a balance because it is neither more uh, spiritual and intelligence, neither more resource oriented. It is a perfect balance sort of thing. This is how you can see the formation of strokes cutting, and accordingly you can make the trades. Now this C is सर basically डॉटेड लाइन क्या बता रहा है उसमें? ई में मेजरली 3 लाइन होती है बट आपने 4 बनाई है, एक डॉटेड है। एक्चुअली एक दो तीन, ये तीनों लाइन जो है ना, किसी में एक, ये तीनों में से एक होगी, किसी की एक होगी तो उसका ये मतलब है, अगर 2 नंबर होगी तो उसका वो मतलब है। ये तीनों में तीनों नहीं रहेंगी, खाली एक ही रहेगी। अच्छा, पोजीशनिंग मिडिल वाले की पोजीशनिंग है। हाँ, वो मिडिल की जो पोजीशनिंग है, ये ऑप्शन हो सकते हैं उसके, और ये ऑप्शन इस ऑप्शन के हिसाब से उसके जो ट्रेड्स हैं वैसे बने हो जाएंगे चक्र के अंदर। हो सकता है इंडिगो में भी आए, हो सकता है ऑरेंज में भी आए, वो इट डिपेंड्स। मैंने तो खाली आपको एक आइडिया बताया कि दिस इज हाउ वी relate the various chakra related emotions, thoughts and actions, how they are reflected in your handwriting, in your letter formation. माने सर ऊपर नीचे हो तो इस तरह से हमको इंटरप्रेट करना है, राइट सर? बस 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 वो मैंने कोशिश करी बताने की, अलग अलग बनाने की जगह एक ही में डाल दिया मैंने। थैंक यू सर। ठीक है ना? ओके। नाउ दिस टाइप ऑफ ई विच इज हैविंग 2C, बट ऊपर वाला C छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाला छोटा है, इट मीन्स जो इंटेलेक्चुअल जो है उसका कम हो गया, और बीच वाला बड़ा हो गया, मतलब उसमें प्रैक्टिकल एंड रिसोर्स ज्यादा हो गया। Again, if you see this E is basically, if you see it is like the letter जो ब्लू में जैसे क्रॉस हो रहा है बेसिकली, अब इसमें आप देखेंगे तो ब्लू में क्रॉस हो रहा है, बट यहाँ पे वर्टिकल लाइन है नहीं है सच। इफ यू सी द इफ यू ड्रॉ अ लाइन, इट विल कम इनटू द ब्लू रीजन, so that way you can see this fellow is connect with the blue, so blue chakra related things will be there. Okay. सर उसमें राइट साइड में लिखा हुआ है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस और एक सर ब्लू के लिए थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र, ब्लू चक्र। यस, express and inspire. Inspire is what this is. मिराज हुसैन वांट्स टू जॉइन, वो बार-बार बोल रहे हैं जॉइन के लिए। ओके, मेरे पास आया नहीं है इसका, कैसे करें इसको? मिराज का एक्चुअली वो बांग्लादेश का है ना, चक्कर हो, उसके तो नेट का चक्कर हो जाता है कुछ, इसमें मेरे पास आया नहीं कुछ, कैसे करें मिराज को ज्वाइन? सर वो चैट पे बोल रहे हैं, मैं उनको कर लेती हूँ कि आप नीचे वाला लिंक ज्वाइन करें। हाँ हाँ, ठीक है। And if you see the bottommost E, it is basically small vertical lines. So it is the blocking basically. So whatever you are thinking, you are having a block, like a road block sort of thing. So it is a limit. This type of E says the limited thinking.
Whatever he see, he impose some restriction, some stoppage. And whatever I have shown the 7 chakras, these are the, again, I have, for the benefit of having everything together, I have made all the basic things here. 7 chakras. Violet means crown chakra, Sahasrara, Shivatva, positive trait is the bliss, oneness, timelessness. Negative trait बददुआ होती है, कर्स एंड लानत एंड फटकार होती है. तो दिस बेस्ड ऑन द so positivity and negativity, you have to choose according with this. Okay. So like that, in every chakra I have made things with a lot of research and all. So these are the things which we can use in graphology. What are the traits are there? So creativity, in the orange trait, creativity. Negative trait is sex, lust, inertia. Element is water. So element, related element, and the traits which related to these colors, I have jotted down here. It is only for your reference, and you can apply based on your observations, positivity and negativity, considering all those things. Okay. हाँ, ये चक्रास हम सब में कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. इन एवरी लेटर, इन एवरी लेटर में नॉर्मली ये चक्रास तो आप सबसे पहले तो आई में करें. आई में नहीं होता तो अपर जो उसमें कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं. जैसे लेटर पी है, अब लेटर पी का जो कहीं बीच से जुड़ रहा है, कहीं या ऊपर से जुड़ रहा है, या लेटर ई में जैसे बीच वाला ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उससे हम कर सकते हैं. लोअर केस लेटर में नहीं कर सकते. कैपिटल लेटर्स एंड स्पेशली आई पे के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है. आई, ई एंड ऑल द कैपिटल लेटर्स. सर, आपने चक्रा से रिलेटेड जो नेगेटिव ट्रेट्स बताए हैं, वो जब वो चक्रा कमजोर होता है तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका ये मतलब है क्या? मतलब नेगेटिव ट्रेट. हाँ, नेगेटिव मींस चक्रा एंड इनबैलेंस, जिसको आप बोलते हैं ना, बैलेंस है, इनबैलेंस है, ब्लॉक है. हाँ, वो वहाँ ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, तो बैलेंस कर जाएगा उसमें. ओके सर. ठीक है ना. एनर्जी जो है डाइवर्ट हो रही है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है, तो वो नेगेटिव, वो वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा. जैसे अब नेगेटिव ट्रेट कैसे देखना है, अब उसमें 11 नेगेटिव ट्रेट बताए थे मैंने पिछले प्रोग्राम में जिसने अटेंड किया. हुक, टिक, जर्क, ब्रेक, ब्लर, पॉइंट, डॉटेड, ये इस टाइप के 11 ट्रेट्स होते हैं. वो अगर उनमें से कोई एक ट्रेट आएगा तो वो नेगेटिव होगा. और फ्लोरिश होगा तो फ्लोरिश का तो पता ही लग जाता है कि उसमें क्रिएटिविटी है, उसमें कुछ नेगेटिविटी जार नहीं मिलेगा, और नेगेटिव ट्रेट्स जो है अपने आप देख के समझ में आ जाएगा. उसमें सिनर्जी रहेगी. नेगेटिव में सिनर्जी नहीं रहेगी, सडनली चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, एंगल्स हो जाएंगे, कैप्स आ जाएगा, बैलेंस क्लॉ आ जाएंगे, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें आ जाएगी. So now we'll come to our main signature analysis of the personalities. Now this is Elon Musk. If you see the letter E, what I have shown, जो क्रॉस हो रहा था, वो जो लूप बन रहा था, यहाँ लूप नहीं बन रहा, ऊपर से ही पीछे बैक में चला गया. तो इट इज लाइक ए टॉप, ई में टॉप पे हो गया. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसमें कोई भी हुक मतलब ना प्योर अपर जोन में ही चला गया. तो इट मीन्स द मोस्ट हाई इंटेलेक्चुअल ड्राइव हो गया उसमें, वो ट्रेट आ गया इसमें. एंड सिग्नेचर लिमिटेड टू द इनिशियल लेजिबल पेस्टी फ्लैट टॉप बार एट ई and curvy letters. Baki, apart from that top bar, it is a very quick and fast movement. Speed is very high, and there is a curves are there. Curves are also, if you see, the curves are very fast curves. Like here in E, if you see here, it is a very fast phalanx curves, but it is with plasticity and quickness. So it is a constructive and creative.
E has upper C, horizontal and lower C, vertical. If you see here, the lower C जो E का जो फॉर्म हो रहा है लोअर पार्ट वो C जैसे हो रहा है वो वर्टिकल जैसे ही लिख रहा है जबकि ये हॉरिजॉन्टल टाइप का लग रहा है तो देयर इज अ मिक्स ऑफ if you see here it is a very good combination of speed, linearity, circular creativity, simplification. These are all the things which gives dimension to this person, Elon Musk. And everybody know Elon Musk is a very talented guy. He is a CEO for the Tesla, and Tesla is a company which creates unique products. So if you combine all those things, it becomes he is a focus yet limited because Alan he is not written Alan he is limited to E. So he is more focused. He is not he depends for the other things to his talent and team. So he is focused, limited yet solution oriented, created brand, talent, expressive instinct, big accumulated of wealth. Very choice in sex relationship because if you see here the phallic strokes are there so you whatever I have written here it has those instances are captured through Wikipedia and it is there and right mix of extreme micro and extreme macro approach in life so it is horizontal thinking and vertical thinking दोनों जो है इसमें है तो that's why he is able to मैनेज द थिंग्स वो जैसे कंक्रीट होता है उसमें टेंशन लोहा लेता है और कंप्रेशन सीमेंट लेता है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है सेम चीज वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आ रही है बिकॉज ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो लीनियर एंड कर्व these all the very rare combination if you see and that's why he's having a rare success and unique endeavor what he is making. And whatever I have said about his sexual relationships and all those things, so these are all marked in red. You can read it. So nothing more, and I can explain all those things. It is already there. Emma Watson. Here, this is what I have started new. Now, earlier I am just taking the signatures of healthy person only. But now I am taking whatever signatures are there, and all the signatures I am considering. If you see Emma signatures, what I have marked 1, 2, 3. So this Emma 1 is basically it shows the childhood. You can see the softness and the smoothness and the gap between letters and the zone balancing and there is no jarring angles and no exaggeration like a child. Then if you see the second one, it is a little matured and angles has come in the A and W second letter goes above for his intellectual yeah बोले क्लॉ है हाँ अब वो क्लॉ बढ़ गया है जबकि पहले वाले में कर्व था और यहाँ पे हुक आ गया देखिए ये जो मैं पहले भी बता रहा था एमा के 2 एम जो हैं पहले वाले में देखिए ये कर्व्स हैं ये फ्लोरिशमेंट है जबकि एमा के सेकंड में आप देखेंगे ये हुक बन गया है बेसिकली शार्पनेस भी आ गई है एंड हुक एंड पॉइंटेड भी हो रहा है तो दिस इज बिकम्स द हुक एंड लोअर जोन मींस इट रिलेट्स टू लिबिडो तो उनके जो रिलेशंस हैं उसमें स्ट्रेस आ रही है करना चाह रहे हैं कुछ
प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ गई। अब इवन इसमें आप देखें जो डब्लू है एमा विल्सन का, यहाँ पे जो डब्लू है पहले वाले में, पहला जो वी है और दूसरा जो वी है डब्लू का, वी फॉर्मेशन बैलेंस है। यहाँ पे पहला वी कम हो गया, दूसरा ज़्यादा हो गया। इट मीन्स दिस फेलो हैज़ अ लॉट ऑफ नो choices for others. So first is self, second is others. So W is basically related to the sex partners for others. So he has a, no, he may be having lust for so many things, and also to that and because of famous personality, she may have a lot of choices. So the second V becomes more wider than first V in a W. सर ए में दोनों जगह क्लॉ है, उसका क्या मतलब हुआ? ये में क्लॉ नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, तो कल्चरल वैल्यूज ज्यादा है, तो ये मतलब हिस्टोरिकल चीजें करेगी। ये ए जो है ट्रेडिशनल ए है, बट उसमें हुक आ गया, तो मतलब स्ट्रेस है उसको, शी मे नॉट बी एबल टू लिंक विद हिज कल्चरल थिंग्स, मे बी हिज पुराने गांव या उनके जो फोर फादर्स हैं, या फिर और चीजें, तो उसमें she is maybe having some problems and some stress for these things. Okay. सर उनकी साइन डाउनवर्ड जा रही है तो उनका प्रोग्रेस अब नीचे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होता? अभी हम बिल्कुल होना, ये 3 नंबर पे वही है। अभी देखिए इसमें ब्लब भी आ गया, लेटर्स में ई में आप देखें हुक भी आ गया यहाँ पे, और नीचे का जो ई का जो लास्ट वाला स्ट्रोक है देखिए पतला होते जा रहा है, इसमें छोटा सा ब्लॉक भी आ रहा है, ठीक है, जबकि ये पहले दोनों में नहीं। तो ये दोनों, ये तो बैलेंस था पहला वाला, दूसरा वाला जो 45 डिग्री मतलब हाई एम्बिशंस हाई गोल्स हैं, बट यहाँ ई में जस्ट लुढ़क रहा है, मतलब सीधे डाउनफॉल में जा रहे हैं। देन इनकी हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो रहा है, और ये जो फ्लो में आप यहाँ देखिए ब्लड फॉर्मेशन है जहाँ मैंने एरो मार्क करके रखा, एंड यहाँ पे सडन accumulation of bulbs. It means there is a heavy concentration of energies in the middle part of your body. So third is a depressed mental stress. Okay, so this is something which you will not find anywhere. ये इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे सैंपल साइज कम कर दिया मैंने, but I am covering more area and it is more holistic. And same E, अब देखिए तीनों E है, बट इसमें बेस्ड ऑन द अदर फैक्टर्स वो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। जो मैंने आपको पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब वो उसके लिए आपको दूसरे ट्रेड्स भी देखने पड़ेंगे। सेकंड, क्योंकि आपका जो पूरा नाम है ना वो 100% है, जबकि आपका पहला लेटर इट इज अ पार्ट, मतलब सपोज आपके नाम है एमा ही जैसे लिखा है, तो इसमें एमा को अगर आप पर्सनल को अगर आप बोलेंगे तो इसमें 4 हुए, तो मतलब एक एक लेटर्स की वैल्यू हुई 25%, 25, 50, 75, 100। तो ई की वैल्यू खाली आगे आएगी 25, बाकी 100% करने के लिए आपको इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो जब आप देखेंगे तब जाके वो एमा जो है पर्सन वो पूरा एनालाइज होगा ग्राफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ, राइट। The curvy traditional E and A tells about cultural instinct and expressions. In spite of childhood troubles with parent association, she is able to maintain her true spirit and philanthropy. Philanthropy again जो अपर जोन में जा रहा है, ये philanthropy मतलब चर्च ओरिएंटेशन, एंड यहाँ पे इस समय तो रिलेशंस भी है, बट अपर जोन का आप ये टी में भी जो है विल्सन का जो आप देखेंगे, वॉटसन का जो टी भी ऊपर जा रहा है बहुत, और स्ट्रेस भी हो रहा है। तो दिस फेलो दिस रिप्रेजेंट स्ट्रेस एंड टेंशन अबाउट द मेंटल हेल्थ, मेंटल टेंशन फॉर द सोसाइटी बेसिकली। तो दिस इज दैट्स व्हाई शी बिकम्स द ट्रू स्पिरिट एंड philanthropy. She has helped so many fellows. Her parents had divorced when she was young. Began her modeling career. Watson is an outspoken feminist. She donated $1 million to Times of UK in February. So these are the things which you can relate with the things.
This is all self-explanatory, so I will not go much. Same things is happening with our Deepika Padukone, so that's why I have highlighted here. Deepika Padukone also having stress and mental problem, depression. Is passed through so many depression. He is having similar strokes and all those things. This anxiety again, we are talking is something graphological point of view, and these are the various things which you can relate in a person: physical, psychological, and behavioral. So when their chest is, you feel chest is very tight, it is a physical. When it is a intrusive thinking, you want to मतलब intrusive मतलब बीच बीच में टांग मारना है किसी के लिए, तो वो होगा एंजाइटी का होगा. अनवेलकम एंड एक्यूजेटरी थॉट्स, किसी को ताने मारना कुछ करना, तो ये बेसिकली एंजाइटी का ट्रेट्स है. बिहेवियरल में अवॉइडेंस ऑफ एंजाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन इंक्लूडिंग अवॉइडिंग पीपल, टच, मीडिया, बुक्स एंड अदर थिंग्स. सो बिहेवियरल में ये चीज़ों लोगों को पसंद नहीं करेंगे. So these are the things which is for your extra for relation. You can relate all those things, and you can have a very, if you want some sort of essay sort of thing for personality. So these things will help you a lot to make the big explanation and theory background about those things. Now comes to Elvis Presley. Elvis Presley is a very famous singer, and if you see here, he is compared to whole signature, he is a very modest. He is not. It is always the size of first letter is the personality index. The size of normally 3 to 5 is a very okay. But after 5 to 7 or 8 times size of middle zone is a exaggeration. So they are more aggressive. They want to live larger than life. But this fellow is not that aggressive. He is a modest. And if you see he is having the capacity normally. This type of continuity, if you see the horizontal strokes are there in the singer, because they, when they sing, the voice, the rhythm tries to maintain. So there is no break. Same thing if you see the Anup Jalota के signature में आप देखेंगे, horizontal stroke बहुत बड़ा रहेगा. Even हरि प्रसाद चौरसिया के signature में देखें तो कहीं भी continuity का break नहीं होगा. एंड एल्विस प्रेस्ली का जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, पी जो है, एल्विस का एस का जो एंड स्ट्रोक है उसका स्टार्टिंग स्ट्रोक बना के उसी को पी बना दिया. एंड दिस पी इज अगेन देयर इज अ फेलिक थिंग्स. फेलिक इज बेसिकली हियर इज विद पेस्टोसिटी एंड स्पीड, सो इट गिव्स द हाई एनर्जी लेवल which reflects in his songs and career, and it makes him a great singer. But same Elvis Presley, if you see here, the modesty, the balance, the E, the curves, if you see, it becomes more thinner, means more personal, and the pressure becomes very weak, and there are a lot of small dots. And if you see the sudden bursting of pressure in between, very light and very heavy. These are nothing but the blood flow. Basically blood becomes thick because of more water content, so because of that pressure comes very slow. And when it comes to your organ, where it, because of alcohol and all, so that lightness cannot be continued because the organ takes him to filter. So here it becomes jam sort of thing. So here he has to work more, and especially all these things, if you see in the middle zone, it is coming.
So middle zone kidney has to filter all the toxins and all. So because of those things, the alcoholism is reflected clearly here, and she is addict, alcohol addict, and his friend circles are using him as a ATM machine. And if you see the Y goes very left. Here also, here if you see the line goes very far on the left side. So this again indicates the person who takes extra care of their friends. And these friends, in spite of knowing that this alcohol is bad and his friend health is going deteriorated, but still they want to exploit those things. So he knows, but he cannot help out. This Y loop on the left is reduced, but not to that extent. It is there, and it ultimately comes to his death also. If you see this, Y has a overinflated loop on the extreme left with sharp and sudden change in direction, heavy pressure variation in the right signature, and blurred speed and weight. First and family name separated here, but here if you see first and family name are integrated. Here it is separated. So because of friends and all negative things, there is a gap comes. So सर वेरिंग प्रेशर में जो प्रेशर का प्रॉब्लम है वो लो ब्लड प्रेशर या हाई प्रेशर? प्रेशर नहीं है इसमें. एक्चुअली जो स्पीड है ना, स्पीड जो हमारा ग्राफोलॉजी ट्रेट है, स्पीड इज नथिंग बट फ्लूडिटी. आपका जो ब्लड का जो फ्लो है, वो जो स्पीड है वो बताती है. और उसमें अगर आपका ज़्यादा हैवी मेटल हैवी हो जाएगा तो वहाँ पे आपके प्रेशर हैवी हो जाएंगे. जहाँ वो उसमें ब्लड कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर लेवल एंड टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हल्का हो जाएगा, तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा. ओके सर. Okay. So sudden change in heavy stress, pain, and married life, serious physical and mental health issues with blood-related organs. Is what I have explained. And these all traits are very well related to his life, and which is and these life instances are from Wikipedia. सर आपने लोनर का क्या वो अलग हो गया ना. तो फैमिली और एल्विस प्रेस्ली में जो दोनों कनेक्शन थे वो नहीं है ना अभी. कनेक्टिविटी खत्म हो गई. एक मिनट मेरा वो चला गया. 1 मिनट. 1 मिनट. दोबारा देख लो. तो यहाँ पे आप देखो ना, ये एल्विस प्रेस्ली में S&P कनेक्टेड है. यहाँ पे फैमिली कनेक्शन था. अभी लोनर हो गया दोस्तों को, तो ये बीच में गैप आ गया. ओके. ओके सर. So many small. एक डाउट था मेरा सर. हम जब भी साइन करते हैं तो थोड़ा तो विश्व गैप होता ही होता है, राइट सर? हाँ बिल्कुल होता है. कोई भी दो सिग्नेचर 100% एक जैसे नहीं होते, बिकॉज 5 to 15%, मिनिमम 5% तो होता ही है. मैक्सिमम 15% तक जाता है. तो वेरिएशन होते हैं दो सिग्नेचर्स में. अगर दो सिग्नेचर 100% एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि एक सिग्नेचर जाली है. ठीक है. So nature always takes 15 degree, up to 15 degree in his hand to move your life, to change your direction in your life. Okay.
आपको पता ही नहीं लगता, ट्रेन हल्का सा 3 डिग्री मुड़ती है, वो गोल घूम के दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, वही सेम ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में घूमती है, वो दूसरी जगह चले जाती है। वैसे देखने में पटरी तो बिल्कुल लगता है सीधे सीधे जा रही है, कहीं चेंज कुछ हो नहीं रहा है, चेंज पता ही नहीं लगता। सेम वे नेचर टेक्स केयर, nature has lot of ways to divert you, to create diversion and direction. And this fellow has a failure of nervous system, so I have put some nervous system stages. How many stages are there? This will help you to, again, as a additional material when you prepare some sort of report. These things will help you out to make more, elaborated and more practical things which one can utilize for his medical health monitoring and everything. Okay. So I'm not a medical expert, but these are the various very common and major steps which a normal fellow can understand. But these have to be further explored based on your observations and the situation. The person who is in stage 1 or stage 2 and stage 3. Then stage 3, what is the thing? Then so many things. You have to again go level 3 down. But these are the only indicators you can, it is only pointer sort of thing which you can take care while you are analyzing the signatures. आई थिंक 8 बज गया, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का वेट कर लूँ, मैं जरा पानी पी के तरह वो कर लूँ, बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह सूख रहा है, विथ योर परमिशन। श्योर सर, प्लीज सर। हाँ, तो अभी 8:06, तो मैं 8:12 पे आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का रखिए। थैंक यू सो मच सर। उसमें भी बात कर सकते हैं, यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड डिस्कस, यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम।
मोहम्मद क्या हाल चाल है? तुम्हारा एंग्जाइटी स्केल का काम पूरा हुआ? मिराज, ओके, तो स्टार्ट अगेन। जी सर। बाकी लोग भी आ गए भाई। मिराज, परवेजी, हाँ यस सर। yes, and Anisha, are you there? Munira, I think नमाज के लिए गई थी। सपना जी हैं आप? Yes, sir. Yes, चलिए बीजल भी हैं? जी सर, जी सामियो। चलिए भावना भी है। चलिए तो हम स्टार्ट करें फिर। हो गया 5 मिनट हो गए। So now Emma Thompson. I'm inside also, don't worry. Okay, so Emma Thompson is a basically film theatre person, a famous actor. If you see E at the top, it is very small, sharp hook is there. And stroke E का जो बेस लाइन है आप देखिए, ये बेस लाइन यहाँ होना चाहिए, बट बाकी जो लेटर्स है बेस लाइन से नीचे चले गए पूरे के पूरे स्ट्रोक। So end stroke below ends towards left and stepped baseline and writing both as a similar pattern. Writing and the signature both are having a similar feature. So this tells about the deep sorrow, depression with parents and natural person. But natural person. Because the E is lifted or other remaining letters are vice versa. The remaining letters are goes down. Just like किसी ने प्रेस कर दिया एंड या फिर लेटर का ही लिफ्ट हो गया। ये दोनों चीजें से आप देख सकते हो। बट इन दिस केस इट इज बेसिकली स्टेप बेसलाइन। स्टेप मीन्स देयर इज अ आपका जो फ्लोर है, जो आपकी रोड है, वो कहीं गड्ढा एक सडनली जर्क आ गया, तो लाइक ए स्पीड ब्रेकर सॉर्ट ऑफ थिंग, स्टेप डाउन हो गया, तो विच इज अ नेगेटिव ट्रेट। सो दिस फेलो हैज अ डीप सरो एंड डिप्रेशन में रही with parents, because parent is name is written as a second line, so parent is already there as a base for him, and the stress shown for the in the surname we see lot of angulars are there, जबकि इनके नाम में बहुत एंगल नहीं है, जबकि इनके सरनेम के उसमें एम आप देखिए, टी देखिए, बहुत सारे एंगल्स हैं। एंड नॉट ओनली दैट, मिडिल जोन के साइज वेरिएशन हो रहा है एंड स्लांट भी वेरी हो रहा है। सो शी हैज अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट पेरेंट्स। सर हाँ, ये में यहाँ पे वेरी शार्प बुक है सर लेफ्ट हाँ below ends towards ends हो रहा है, मतलब it means that fellow is not able to move out helping, but he is
हैविंग प्रॉब्लम, ही स्पेंड लोअर जोन में जा रहे हैं, जो एंड स्ट्रोक है नीचे जा रहा है, मतलब ही स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स विद नो रिटर्न बैक, नो फॉरवर्ड मूवमेंट्स एंड स्ट्रेस, जैसे जहाज ने लंगा डाल दिया मतलब आगे बढ़ नहीं पाए, ओके। लाइक दैट। सर, ये ऊपर नीचे दो सिग्नेचर का क्या मीनिंग होगा? हाँ, मैंने बताया ना, पेरेंट्स मतलब जो सरनेम लिखा है ना वो नीचे लिखा है, मतलब सरनेम जो नीचे लिखा है, नीचे में क्या आता है, नीचे अंडरलाइन आता है। अंडरलाइन क्या है? अंडरलाइन आपको एक बेस देता है, और ये जो सरनेम है वो एज ए बेस लाइन काम कर रहा है। इट मीन्स दैट पर्सन हैज, पेरेंट्स हैज क्रिएटेड अ बेस फॉर हिज हाई लेवल। नॉर्मली ऐसे जो लोग के जो सिग्नेचर होते हैं बहुत अर्ली सक्सेस होती है। सुष्मिता सेन के आप सिग्नेचर आप देखें, ऐसे ही है। सुष्मिता उसके नीचे सेन है, उसके फादर मिलिट्री में थे, बहुत सारा उसको फ्रीडम दिया, एजुकेशन दिया, अपॉर्चुनिटी दी, तो बहुत जल्दी सबसे कम उम्र में सुष्मिता सेन ने मिस वर्ल्ड बनी, तो वेरी फास्ट साइज। जबकि प्रियंका भी है, बाकी भी है, बट उनका जो उम्र था थोड़ा टाइम लगा था। बट सुष्मिता सेन को ने जो जिस उम्र में खिताब लिया वो बहुत कम उम्र में लिया, सो दे हैव वेरी फास्टर सक्सेस रेट्स, बिकॉज वो दो स्टेप हो गए आगे हो गए, ये एक ही स्टेप में चल रहा है, ये दो डबल स्टेप, सो दे गेट वेरी फास्टर सक्सेस, अर्ली सक्सेस यू कैन से। बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, सर? यस, बिकॉज दे हैव एक्चुअली सक्सेस जो है, सक्सेस क्या है? सक्सेस एक इवेंट है। अगर वो मिस वर्ल्ड नहीं होती तो कौन जानता उसको? वो इवेंट है, वो इवेंट के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, सपोर्ट होता है, बहुत सारे सालों की मेहनत होती है, सोच होती है, सब कुछ होता है, वो सब चीजें आपके बेसलाइन में पता लग रहा है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। एंड द डिप्रेशन के अगेन यहाँ पे दिस फेलो इज अंडर लॉट ऑफ डिप्रेशन, सो लॉट ऑफ डिप्रेशन रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, how to overcome and what are the things what you can do and you cannot do, all those things are there. These things also, suppose some you have to give some analysis report, so need not to do for others, you can take some things from here and make it clear, and based on the feedback from the writer you can choose some of things which is relevant to him, so you can suggest how to move and how to handle the things, because ग्राफोलॉजी एनालिसिस करके करोगे क्या, वो तो उसको भी मालूम है, ठीक है ना। उसको आश्चर्य हुआ कि आपने पहले बता दिया, बगैर टेस्ट के लिए बता दिया, बस वही चीज है, बट आदमी उसी में खुश रहता है, बट उसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। उससे अगर आगे आपने कुछ वैल्यू ऐड किया तब खुश होने वाली बात है, कि तब आपने कुछ काम किया, तब तो उसका पर्पज सर्व हुआ, ठीक है। मेरा मेरा ये मानना है, इसलिए मैं ये सब चीजें दे रहा हूँ। एलिजाबेथ टेलर इज अ वेरी फेमस थिएटर पर्सनैलिटी। अब इसमें एलिजाबेथ का आप यहाँ पे देखेंगे एरो में आ रहा है, तो ये फेलिक लूप क्लियर बन रहा है, जैसे आप जैसे वो बेसबॉल टाइप की होती है ना, ऐसा ये देखिए पूरा बन रहा है, बेलन जैसा ये पूरा फेलिक लूप। एट ई इज ए क्रिएटिंग एक्स्ट्रा स्पेस इंक्लूडिंग लेटर आई, ये जो लेटर नेक्स्ट लेटर है उसको इंक्लूड कर रहा है, उसके अंदर घुस रहा है। कंटेनर सिग्नेचर इंटरमिंगल लाइंस, लाइंस एक दूसरे में इंटरमिंगल हो रही, क्रॉस हो रही। टॉप टी टॉप बार इन द टेलर एडिशनल फेलिक स्टूड्स, अगेन इफ यू सी हियर देयर इज अ टू लूप्स which makes a अपर जोन में कर रहा है, तो ये इंटेलेक्चुअल ड्राइव बता रही है उसमें, जबकि यहाँ पहले में जब बता रहा है तो ये फेलिक लूप जो है ये इनका एनर्जी लेवल बता रहा है, बट जब सेकंड में लूप सेम लूप आके जब उसमें क्रॉस हो रहा है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो ये इट गिव्स यू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस एंड ऑल, ओके। शी हैज सो मेनी broken marriages and relations, all those you can, which you can do, all those things details I have given based on Wikipedia, so it is a trusted source of information which can be connected with this, so
The Taylor T is basically extra loops, pelvic loops crossing middle zone. Again, these loops are, if it is there in the middle upper zone without cutting, it is a positive sign. But when it cuts middle zone and upper zone also, then it becomes a negative thing. It means this fellow has a lot of trouble to deal with persons because of self-harming or negative decisions. So and again, if you go again goes back, and again here if you see, again there is a loop. Again the end, and also it ends with the small loop also. So these are the negative things which is uh, part of his personality, even though she is the best famous and successful theatre personality, but has a lot of personal negative things. So creative energy breaks into ego perversion. This ego perversion, just like हमने जैसे बताया था वहाँ पे ई में पहले वाले में perversion. Because of this, because ये देखिए बीच में ये लूप आ गया इधर पे, जो हमने पहले वाला आप देखिए, जब शुरू वाला ई परवर्शन वाला देखिए, तो सब इसी में आ गया, वही चीज है. Has a very high creative intellectual drive, because अपर जोन तो है उसमें, इंटेलेक्चुअल ड्राइव तो होगी. कमिटेड कोई कनेक्टिविटी है, कोई गैप है नहीं, तो कमिटमेंट लेवल इज वेरी हाई. अनेबल टू क्रिएट सेफ पर्सनल स्पेस एंड सोशल एक्सप्रेशन, क्योंकि जो लाइफ इंटरमिंगल्ड हो रही है, तो वो स्पेस जो है एक दूसरे के स्पेस में एंटर हो रहा है. So that space is basically personal space, space between you and society. So these are the and because of this state, the person offers himself to get exploited, and that is what self-harming trouble relations with male adjustments. So these are the again I have write down in the one here. She was married 8 times to 7 men. You see, this is Sir, what is male adjustment? Huh? Loss of self at upper part and blockage of नहीं सर, इसके ऊपर वाला कुछ तो मेल एडजस्टमेंट ऐसा लिखा हुआ है. हाँ, मेल एडजस्टमेंट में आप देखिए, मेल एडजस्टमेंट में क्या होता है, जब आप कहीं लेटर जैसे ई जेड ए और बी आप देखें, ये बहुत ई वाई ई जेड एंड ए पास में, बी बड़ा हो गया, ई फिर और बड़ा हो गया, देन उसके बाद फिर और भी ए बड़ा हो गया, लेटर्स बड़े हो गए, फिर पास में हो गए, फिर लंबे हो गए. सो द स्पेस, अनइवन स्पेस बिटवीन द लेटर्स इज अ मेल एडजस्टमेंट. ओके सर, इसका मतलब सॉरी मेल एडजस्टमेंट, अगर स्पेस ऐसा समझे कि 4 आदमी है, सपोज आपके अल्फाबेट में जितने लेटर्स हैं वो समझो कि उनको आप आदमी से रिप्लेस करो. ओके. कहीं पास में है, कहीं दूर है, तो मतलब आपका जो रिलेशन है, कई बार किसी से आप क्लोज हो जा रहे हैं और किसी से दूर हो रहे हैं, सबसे एक जैसा मेंटेन नहीं कर पा रहे. दिस इज कॉल्ड मेल एडजस्टमेंट. ओके सर. ओके. इवन टेलर में जैसे वाई एल आप देखिए, एक सडनली गैप बढ़ गया. इवन द बेस्ट विशेष में भी आप देखिए, एस और एच का बीच बहुत दबती, जबकि डब्ल्यू और आई बहुत पास में है, और एस और एच सडनली गैप हो गया, जस्ट 5 टाइम्स गैप हो गया. दिस इज द अनइवन गैप, इट इज कॉल्ड मेल एडजस्टमेंट. अगेन सेम देखिए, एलिजाबेथ का इसमें आप देखिए अपर जोन में ई में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे गैप आ गए. इट मीन्स देयर इज ए टोटल no blockage, there is no flow at all. It means some organs are very heavily impacted, so that they stop working. So the virtual, there is a stoppage of blood flow or energy. The pressure is nothing but energy. Energy, it represents the energy of person. So if it faded, so it means energy is faded. If it is uniform and equally freely moving, it means that energy, the fellow is enjoying energy with the life and moving the things.
But here if you see the Elizabeth Taylor, here there is a very heavy, here there is a gap. And if you see minutely, there is a blur. This gap is not coming just like that. It comes with the lot of breakage, small breakage. You can see lot of dots are there. छोटे छोटे गैप्स आ रहे हैं यहाँ पे. इवन यहाँ अपर जोन में आप देखें बहुत सारे गैप्स स्टार्ट हुए. पहले छोटा गैप हुआ, ब्लर्ड हुआ, उसके बाद गैप्स हुआ, उसके बाद फिर सडनली जैसे बोलते हैं ना दिए की लौ जलती है बुझती है, ये देखिए उसका एनर्जी जो है आ रही है, फिर आके फिर स्टॉप हो रही है. इट मीन्स देयर इज अनइवन ब्लड फ्लो एंड एनर्जी फ्लो इन द लाइफ. सेम वे टेलर में भी आप देखेंगे, वाई में आप देखें डाउन स्ट्रोक में, it is not a smooth stroke, it is a blurred stroke. Here Z में, here also if you see there is a blurred and pointed. And even Z में middle tone बहुत heavy है, जबकि यहाँ पे middle tone L का बहुत E का बहुत ही light है. So there is a this sudden pressure variation is a mood swing as well as some non-functional or problem in the blood flow related organs like the liver, kidney. So loss of cell at upper part, there may be lot of cells, there may be some cells become dead because we have 700 billion neuron cells. So lot of, and at every point some cells are dying and some cells are coming. जैसे बाल भी आपके कितने 5 या 1% बाल डरते हैं, उतने वापस भी हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं लगता. बट दिस रेट इज, अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिर आदमी गंजा होने लगता है. बट ये प्रोसेस होती रहती है. बट ये सेम प्रोसेस इज हैपनिंग हियर. देयर इज अ सडनली हैवी लॉस ऑफ सेल्स इन द अपर जोन. इट मीन्स इन द माइंड. Here it is in the leg, and here it, if you see in the body, in the middle zone there is a energy variation. It means the body is striving very hard to maintain the consistent heavy flow, but unable to maintain in the lower part and upper part. So those are reflected in the signatures. The loss of cell at upper part and blockage of blood flow related issues. So the one is what I have says here. The one is here. She was married to 8 times, and the 2 I have again given somewhere here. So Taylor later started that her childhood ended when she becomes a star. Because जब वो स्टार बनी तो माँ बाप को पैसे की जरूरत थी, और पैसे से ही मतलब तो बचपन उसका खत्म हो गया. Taylor died from the congestive heart failure. जो मैं बता रहा हूँ, सडनली लॉस हो रहा है और फ्लो जो मेंटेन नहीं हो रहा है. So those indications are there. Several. क्या हो गया? वो कनेक्ट कर लेता है इससे. ये माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है. एक मिनट. वो लिंक हो जाता है तो वो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप दूसरे रिलेटेड उसमें चला जाता है. इसलिए मेरा पीसी भी थोड़ा पुराना है, थोड़ा मुश्किल देता है ये. आगे. And this Elizabeth Taylor is also suffered from the obsessive compulsive OCD से थे, and स्कोलोसिस से भी सफर थे, बिकॉज मिडिल जोन में जो प्रेशर वेरिएशंस हो रहे हैं वो प्रेशर वेरिएशन बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रा होते हैं. तो ये टाइप ऑफ स्कोलोसिस आई हैव गिवन. कितने टाइप के स्कोलोसिस होते हैं जस्ट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू सी द एलिजाबेथ का जो अपर जोन है वो अपर जोन अपर में चला गया, बट जो मिडिल जोन है एलोंगेटेड हो गया.
and इसमें तो because of this elongation there is a middle zone basically vertebra हो गया, तो vertebra में जो प्रॉब्लम्स आई और यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है वो विथ एंगल कनेक्ट सडन चेंज इन डायरेक्शन से कर रहा है, वो स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस इनको स्कॉलोसिस की प्रॉब्लम थी, तो वो स्कॉलोसिस का मैंने कुछ डाटा लगाते हैं। जब हड्डी रीढ़ की हड्डी बैंड होती है सी शेप में या डी शेप में, ये इस टाइप से पेन चालू होता है, और एलिजाबेथ के आप चाल देखें तो उनका कंधा झुका हुआ थोड़ा सा रहता है बिकॉज ऑफ दिस पेन, एंड शी बिकम ओवरवेट आल्सो। So lower zone basically, if you see here, lower zone has a very extravagant here. So because this shows here at this point of time she is not overweight, but here if you see it becomes bigger and more deeper. So this shows the tendency of weight extra. Eric Clapton. You see, Eric Clapton has a E is a very typical shape. He makes a C, then the C, the end stroke goes and cross the stem, and it makes a E. This is a unique creativity. Same way, Clapton L also makes same way like this, and the fellow doesn't want to lift the pen. So they are very committed sort of personalities. And very creative because they have created the science, the simplification of strokes to suit their name. So this gives their ability to do the things as per their own way. So Eric Clapton is a very good singer and guitar player. Simplified C with parabolic and stroke angular cross at middle to form cultural E. 1, 2, 3. Okay. I'll show 1, 2, 3 later on. And in a Clapton plunged bigger E. Bigger E in the wishes. In the best wishes, if you see, the E is very big and plunged. वो नीचे घुसा हुआ सा, जैसे ब्रेक कर दिया उसने। तो जब भी बेसलाइन ब्रेक होती है तो मेंटल स्ट्रेस की बात होती है। बेसलाइन इज द मेजर इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। ही इज हाईली क्रिएटिव, चाइल्डहुड ट्रबल्ड एनवायरनमेंट, बिकॉज जो चाइल्डहुड जो मेन स्टेम है वो आप है और वो क्रॉस हुआ है, इट मीन्स आपका चाइल्डहुड में कुछ क्रॉसिंग हुई है। सो दैट इज व्हाट चाइल्डहुड ट्रबल्स, एनवायरनमेंट व्हिच हर्ट द सेंटिमेंट्स, नेगेटिव बाइज्ड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस बिकॉज वो फॉर्म ही कर रहा है, वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है। And this 1, 2, 3 I have just shown here. There's 2 is there. First signature is there. What I have told. The second signature is circled I dot opening leftwards. Eric का जो circle I dot opening leftwards. Dwarfed I जो है बहुत छोटा हो गया. Plunge into the lower zone. P in P. Here is P में ऐसा लगता है कि V बना हुआ है. P in V. डेलिब्रेट क्रॉस बार एक्स्ट्रा वाइड, जैसी क्रॉस बार का ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो लेंथ ऑफ टी क्रॉस बार इज बेसिकली ड्राइव एंड स्टेमिना, बट व्हेन इट क्रॉस द मिडिल जोन इट मीन्स इट इज अ सेल फॉर्मिंग ट्रेट्स at an erratic baseline. The baseline Eric is same, but the Clapton, if you see, the baseline goes up and down. So it is a erratic baseline. So it transforms into artistic expression loaded with past events. Depressed feeling has emotion related to ground realities. Letter P symbolizes father image. V split tells about his separation. Timid, fearful, and pain associated. These are the all things are very well documented in the Wikipedia, and so that's why those numbers are written here.
This 5 is there. Fire has drafted to war before Clapton's birth and then returned to Canada because his father is not there. He's an army man, so थे नहीं तो relation भी नहीं रहा. Clapton grew up believing that his grandmother Rose and her second husband Jacob Clapp is their father. So this fellow has a problem, childhood problem, which I have mentioned here. E as a C. The C, if you see here, when your letter is diluted or reflected in different, it means your role model, your image is you are living different image than what you are supposed to do and act. Descending baseline, feeble down strokes and heavy upper stroke. If you see here, normally जो डाउन स्ट्रोक होते हैं हैवी होते हैं. यहाँ पे सी का देखिए लाइट है, जबकि जो अप स्ट्रोक जा रहा है, अप स्ट्रोक टी में यहाँ देखें, यहाँ टी में देखें, ये हैवी हो गया. तो जब भी आपके अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक वेरी हो जाते हैं, जब डाउन स्ट्रोक जो हैवी होना चाहिए वो हल्का हो गया और अप स्ट्रोक जो पतला होना चाहिए वो हैवी हो गया, इसका मतलब है देयर इज अ सीवियर हेल्थ इशू. So identity crisis, what I say, wrong role model, emotional infight with sinking feeling, serious health issues related to blood flow and mood swing. Mood swing again, जो प्रेशर वेरिएशन आप देखें यहाँ पे जो प्रेशर कम है ज़्यादा है, तो जब भी प्रेशर वेरिएशन होता है तो मूड स्विंग्स होता है, हैवी मूड स्विंग होता है. बंदा कभी नर्वस हो जाएगा, कभी एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत तेजी से बोलने लगेगा, मूड स्विंग. So this, because of this drug and also there is a उसके sign and symptoms जो है, he is badly affected by the drug alcohol effect. So I have based on remove me from alcohol. He says he himself says because drug has created very bad situations in life. So alcohol, especially alcohol. So I have given some basics of alcohol and symptoms which help you to understand, and you can further go into the details of personalities. Edward Snowden, you know Wikipedia. Sir, sorry to interrupt. आपने एक भी इंडियन सिग्नेचर नहीं रखे, any particular reason for that, sir? नहीं, इंडियन के मिलते नहीं है. एक्चुअली क्या हम लोग जो है ना, फॉरेन में जितने अमेरिका, कनाडा, इनके जो सिग्नेचर्स हैं जो मेरे को जो नेट से मिलते हैं जो ऑथेंटिक है, इंडियन के भी पिछले वाले में किए थे, इसमें भी हैं, एक आध दो रखे हैं मैंने. जितने मिलते हैं मैं करता हूँ. मेरी कोशिश रहती है एक भी सिग्नेचर मिलेगा तो करता हूँ, बट मिलते ही कम है इंडियन के सिग्नेचर. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. वो बरवे जी ने भी ये सेम चीज पूछा था. देन आई हैव स्टार्टेड, जब भी मैं कोशिश करता हूँ इंडियन के मिले, बट मिलते कम है और उसमें लोग ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करते. और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ उनके लाइफ के बारे में ही पता होना चाहिए. तो कई बार ऐसा भी होता है कि विकिपीडिया में उनके नहीं है. आजकल तो आने लगे, उनके डिटेल्स भी आने लगे, लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं. अब जैसे संजय दत्त का है, तो संजय दत्त का विकिपीडिया में मिल जाता है कि कब उसने दारू पिया, कब जेल में गया, कब ये गया. उसके सिग्नेचर्स भी डिफरेंट के मिल जाते हैं. तो फिर वो क्या है, वो एक ऑथेंटिक होता है, रादर देन कि आपने कुछ सिग्नेचर लेके कुछ भी कहानी बना के आपने चेप दिया. तो मैं वो नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम ए टेक्निकल बैकग्राउंड. सो मैं लॉजिकल जाना चाहता हूँ, उसके फैक्ट्स को कनेक्ट करता हूँ मैं. तो मेरा ये अपना तरीका है. जो मैं फिलॉसफी या कहानी नहीं बनाना चाहता, मैं फैक्ट्स को कंपाइल करके एक रिपोर्ट ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, रादर देन मैं कहानी बोलूँ. मैं एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता हूँ तो जिसके लॉजिक्स हैं और उसके फैक्ट्स हैं और वो चीज़ें अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, जो एनीबडी कैन चेक इट आउट. थैंक यू सो मच सर. ठीक है. अच्छा, ये एडवर्ड स्नोडन का आप देखें, दिस फेलो हैज अ पनामा लीक, जो आपने सुना होगा, पेपर में आया था बहुत सारा. अब देखिए क्रिएटिव बंदे क्या होते हैं,
अब देखिए यहाँ पे he is so creative and so intelligent, and he gets very fast bored of the things. He catch the things very fast and move ahead in the life. So अब ये चीज इसमें आप देखिए, यहाँ माइक्रो हैंडराइटिंग है, उसके बाद मिडिल साइज आ गई, कैपिटल्स हो गए, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच का आ गया, then signature is totally illegible and different. So there is so many variations. There is a person is same, but the variety of the writing symbols are so much variation. तो दिस पर ऐसा होता है, इनफैक्ट कुछ कुछ तो ये ट्रेड्स मेरे इसमें भी हैं, कई बार मैं बचपन से ही देखता हूँ कि हर पेज पे मेरी डिफरेंट राइटिंग है. इट मीन्स दैट पर्सन गेट बोर्ड वेरी फास्ट. उसको कुछ भी चीज उसमें ज़्यादा देर रहेगा और कुछ नेगेटिविटी चीज़ मिलेगी तो और बहुत जल्दी निकल जाता है, वो दूसरी चीज़ ट्राई करता है, उस चीज़ को फिर हटाने के लिए एक डिफरेंट तरीके से ट्राई करता है. सेम चीज़ स्नोडन में जो गलतियाँ थी सिस्टम्स की, जिन लोगों ने पैसे बनाए थे और बहुत सारे करप्शन किया था, इसको पता लगा और उसने फिर लीक्स किया, पनामा लीक्स में. एंड अब ये देखिए उसका जो सेंसिटिविटी है, पीक्स देखिए कितना अपर जोन में बिल्कुल पॉइंटेड पीक्स है, एंड अपर जोन में इवन ई में भी आप देखिए प्लेन सिंपल है, कोई इसका अपना खुद का वो नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल ड्राइव एंड इंक्लूसिवनेस एंड वैरायटी एंड ही हिज एबिलिटी टू डील वैरायटी ऑफ थिंग्स very fast, switching very fast is reflected in the handwriting traits. Just see the variety, and the drive is reflected by the vertical, the lines, especially horizontal lines. And if you see this hand stroke, basically going the cover and to make the person safety, and definitely it makes a hook and self-harming. Even though he knows when he does he will be get punished and all though. So he knows he will be get punished. So self harming, यहाँ पे आ गया self harming. और again he leads to the life and he overcome the situation. He does the things and he come out of the situation with these strokes here, but with tension. There is a small hook is also there. So this is how the Edward Snowden personalities are reflected in his handwriting, and you can relate each and every traits with the handwriting features. So cultural simplified, he looked the upper zone connection between D and W, convex baseline, scribble letters O R B, and stroke goes back with the crossing loops ends with small hook. Lighter down strokes at E during start and pasty up stroke at bottom continued in the letter D. The pasty is basically the strength and the creativity, the artistic or creative art with a lot of energy. So this transforms into the love, traditional values, self-respect with intense intellectual urge, ability to connect dots, information data, high intelligence for solutions, high-spirited safety orientation and breaking established norms, which bothers him, less affection with mother, because जो मदर बार है ऊपर बिल्कुल प्लेन है यहाँ पे, तो अपर पोर्शन जो है मदर का है, नीचे का फादर का है, so the less affection, and those things are duly backed up by the facts by the Wikipedia. Her parents are divorced in 2001 and his father remarried. And Snowden scores above 145 on the 2 separate IQ tests. And children knows who is at wrong footing, so he goes to the father, not mother side. हमें ब्रेक लिया था अभी 8 बजे का भी नहीं लेते. एंड बेसिकली ही इज अ विसल ब्लोअर. तो विसल ब्लोअर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये मैंने लिख दी. तो दीज आर द ट्रेड्स यू कैन सी अ पर्सन इज अ विसल ब्लोअर नॉट.
alert the public, wait with the people, stop abuses of power, protect environment, प्रोटेक्शन का जैसे कवर स्टोर देख लिया, फॉलो योर कंसेंसस, दो अपर जोन इसमें जाता है, डिफरेंट डेमोक्रेसी है तो मिडिल जोन में फ्लूडिटी वगैरह दिया है, टेक ए स्टैंड, इट मीन्स वो कंटिन्यूटी है, ब्रेक नहीं होता है, प्रमोट है पब्लिक डायलॉग, तो जो कनेक्शंस है, ई जो कनेक्टिविटी हो रही है वो डायलॉग में आ रही है, मेक ए डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ ऑल दोस थिंग्स उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो डिफरेंट है, तो मेक ए डिफरेंस, बी ए करेजेस, तो उसका जो ड्राइव है, स्पेशली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जो ड्राइव है, जो लीडरशिप है, वो उसके करेजेस में आ रही है, सो दीज आर द थिंग्स which can be related to his personality traits. सर आप ये सबके ट्रेड्स डाल देंगे क्या ग्रुप में? ये सारे ट्रेड्स जो विसल ब्लोअर के हैं वो जो आपने मेंशन किए ओरली, ये तो आपको मैंने पूरा दे दिया आपको, ये पूरा डॉक्यूमेंट दिया मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ही नोट दे रहा हूँ। हाँ सर, नहीं ये जो विसल ब्लोअर के ना, अलर्ट द पब्लिक, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब के जो आपने अभी बोले ना ट्रेड्स, वो कह रही हूँ। आप बनाओ, आपको जो नहीं समझ आया मेरे से पूछो। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको इतना काम है करने को इसका हिसाब नहीं, मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अब ये है कि अब लोगों को थाली में परस के चम्मच लगा के मुंह तक देना, ये मेरे से नहीं होता है, ये आपको थोड़ा बुरा लगेगा, उसके लिए मेरा माफ़ी करें। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे, हमारे इवन हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग, कोई अपना अंगूठा दिखा देंगे, फूल पत्ती भेज देंगे, करेंगे कुछ नहीं। भाई करो यार, करने से जो आप सीखते हो ना वो कोई नहीं सिखा सकता, और वो कभी छीन भी नहीं सकता, ना कभी याद करने की जरूरत है। अब देखिए मैं इतने घंटों से बोल रहा हूँ, मैंने कोई किताब रेफर नहीं की, कभी आगे पीछे नहीं किया, किसी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया तो बता दिया ना, ये बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग। जब आप खुद गड्ढा खोदते हो और करते काम करते हो ना, तो वो मेमोरीज में जाता है, और वही सही लर्निंग होती है, और वही नॉलेज बन के आती है। अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन आपने लिए एक कान से दूसरे कान में सुन ली, पेपर में कितनी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हो, याद रहती है आपको? नहीं रहती, बट जो आप करते हो आपको याद रहता है। तो करिए, आप करने से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं हूँ हमेशा आपके घर। जी सर, मेहनत करिए। मैं सॉरी, मैं मेरे साथ जो लोग हैं मेहनत करेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वो अपने आप चले जाएंगे। मैंने तो मेहनत से ही सीखा, मेरा कोई गुरु भी नहीं, और मेरे गुरु बहुत सारे, दैट वे इफ यू सी आई एम वेरी लकी कि मेरे बहुत सारे गुरु हैं, क्योंकि मैंने मेहनत करी, जो हाँ जिससे मिला सबसे सीखा। तो अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, ही इज अ राइटर, वेरी गुड राइटर, फेमस राइटर। इफ यू सी हियर अगेन क्रिएटिविटी भी है, बट अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो ये डंडी है, ये यहाँ पे टी बना रहा है और एच का भी बार बना रहा है, सो दिस इज क्रिएटिविटी। बट ई को जहाँ ये क्रॉस कर रहा है, दिस इज नेगेटिव। ओके, तो ई अपर जोन एम्फेसिस विद द पैराबोलिक फर्स्ट नेम विद रिस्पेक्ट टू द फैमिली नेम। सर नेगेटिव जो बना रहा है, तो नेगेटिव ट्रेट्स क्या होंगे? इज दिस आल्सो चाइल्डहुड प्रॉब्लम बिकॉज ही इज गोइंग टू द लेफ्ट? नो, इट इज सेल्फ हार्मिंग। ओके, सेल्फ हार्मिंग, क्योंकि बीच में है ना, और क्रॉस हो रहा है। और जो मदर को चाइल्डहुड प्रॉब्लम जो होती है नॉर्मली बॉटम में आती है या अप में आएगी, ठीक है। सर बॉटम में भी लाइन बना है, तो बेसिकली मीन फिजिकल रिलेटेड समथिंग। ई में ना, यहाँ पे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस होगा, बट नॉट स्ट्रेस तो होगा, बट नॉट अ ट्रबल, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज इन डायरेक्शन है। यहाँ ई जब एंड हो रहा है तो स्पेशली द लोअर जोन है तो फादर रिलेटेड है, तो फादर रिलेटेड
इश्यूज होंगे, थोड़े से प्रॉब्लम्स होगी, बट मतलब इश्यूज होंगे, नॉट द ट्रबल। ये जैसे सिमिलर टू दैट ऑफ हिज फादर बिफोर ही किल्ड हिमसेल्फ, फादर रिलेटेड आ गया, ठीक है, और फादर रिलेटेड ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। मैंने इसमें से बहुत सारी शॉर्ट और जो प्रिसाइज चीजें लिखी हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रेड्स हैं तो मैंने लिख भी दिए यहाँ पे, उसको रिलेट है उसमें, बट उसमें मैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता हो जाएगा। बट जो एनालिसिस जो मैंने यहाँ पे इतना किया, जो खाली इतना करता हूँ, तो इसमें आपको बहुत ही प्रिसाइज एंड लिमिटेड किया है मैंने। इसको आपको अगेन पढ़ना पड़ेगा और अगेन आपको देखना पड़ेगा। अगर वो मैं इतना करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये फिर 10 टाइम्स का हो जाएगा, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा। मतलब करने का समय नहीं होता, उतना मेहनत चाहिए उसमें, उसके लिए मेहनत चाहिए। बट मैं कम से कम मैं ये चाहता था कि एक स्टेप स्टार्ट करें, सो दैट ग्राफोलॉजी का एक वैलिडेट स्पेस बने, रिस्पेक्ट मिले, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अदरवाइज सर नीचे जो लाइन है वो सपोर्ट के लिए नहीं बोली जा सकती? सपोर्ट के लिए बोली जाती है। अगेन यहाँ भी अब आप देखिए, जो जी है बहुत हैवी हो रहा है, एंड वाई ऑल्सो है वेरी हैवी, ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, इनको एक टिपिकल बीमारी थी जिसको हार्मोनी हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये नेगेटिव ट्रेड में हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अभी तो पॉजिटिविटी पेस्टिसिटी में आ रही है, तो ये मतलब अभी यहाँ बीमारी आपको दिख नहीं रही है। अब नेगेटिव इनका जब थोड़ा और टाइम लाइन में इनके आगे जाएंगे तब ये जो चीज़ है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्लियर समझ में आएंगे। अभी तो ये उस एज में नहीं है, अर्ली एज में है, तो ये चीज़ पॉजिटिव में जा रही है, ये स्ट्रेंथ में जा रही है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू कॉमन की एच मिडिल पेनफ्लिक एंड ब्लंट एंड, so it converts into intellectual abundant drive, his own more practical approach, artistic talent at par, natural instinct of cultural values, strong libido, multi-talented, self-harming linked with heredity। ठीक है ना, हेरिडिटी है, उसका फादर का है। इनके 5 पूरे पुश्तों में लोगों ने आत्महत्या करी। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर ड्राइव एंड एफर्ट्स। So Hemingway's behavior during his final year has been similar to that of his father. Before he killed himself, his father may have had a hereditary chromatosis, ये बीमारी है। अब ये मेरे को मैंने भी ये बनाने में बहुत सारी लर्न की है। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं, मेरे को ये टर्म भी नहीं है। अभी आधे घंटे बाद पूछोगे तो मेरे को ये पता भी नहीं होगा, बट दीज आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल and which we can, as a graphology, we can relate to the things. So मैंने वही काम किया। अब इसको और आप कोई मेडिकल वाला हो और साइकोलॉजी वाला हो तो इसमें और इसको फर्दर फाइन ट्यून एंड डिटेलिंग कर सकते हैं। Whereby the hemochromatosis is nothing but excessive accumulation of iron and tissues and culminates in the mental and physical deterioration. Medical records made available in the 1991 confirmed that the Hemingway had been diagnosed with hemochromatosis in early 1961. His sister Ursula and his brother Leicester also killed themselves. Other theories have been arisen to explain Hemingway's decline in mental health, including his multiple conscious confusions during his life. They have accused him to develop chronic traumatic encephalopathy, CTE is the short name, leading to his eventual suicide. Hemingway's health was further complicated by heavy drinking. फिर वैसे ही आ जाता है। एक्चुअली ये लिंकेजेस जो डले हुए हैं विकिपीडिया से उस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में, तो वो सब चीज़ आ जाती है, आ जाती है। थोड़ा सा भी अगर हाँ हाँ चलो, तो वो डिसीज की फटाफट आ जाती है। ओके, सो
Now just see the handwriting and signatures of the, just see the pen pressure variations, the down stroke, descending letters, and the crossing here. If you see the loops, all these are all negative. So third line word, but has a downturn. T crossbar shows depression. High degree of pressure shows heavy mood swings. So these are the Hemingway signatures. Here, if you see the uh, डबल डाउन स्ट्रोक लाइक इन ई न्यूरोटिक, आपने जो बोला था ना ई में, जो किसी ने पूछा था डबल लाइन है न्यूरोटिक वाला, ये देखिए न्यूरोटिक टेंस लोअर जोन में आ गया वो, सेम टाइप ऑफ, जबकि ई में जो था मिडिल एंड अपर में था, यहाँ पे मिडिल एंड लोअर में आ गया, सेम न्यूरोटिक प्रॉब्लम आ गई। तो लोअर जोन, लोअर वन क्रॉस बार हैज अ मोर कवर्ड स्पेस, क्लियरली शोज emphasis of heredity, impact heredity, hemochromatosis as reduced pressure which shows all ill health. Note that this crossbar in the upper sign written from the right to left normally, but in the case of above it is the left to right. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब भी आप बार को स्टार्ट करते हैं लिखते हैं तो वहाँ हैवी होता है, जब आप एंड करते हैं वहाँ पतला होता है। तो यहाँ देखिए पतला या हल्का हो जाता है, तो यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। तो थिंग्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई ये जो क्रॉस बार है इनको क्रॉस नहीं किया इसमें, जबकि यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हैवी है, यहाँ पे आगे जाके पतला हो रहा है। तो द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड, ईच स्ट्रोक्स वेरीज। ओके, जब उल्टा सोच रहे हैं तो कंजर्वेटिव होगा, तो इसलिए साइन थोड़ा छोटे हैं, यहाँ कंजर्वेटिव नहीं है और फ्रेंडली है, तो यहाँ पे स्लांट फॉरवर्ड भी है और लाइन बड़ी है। ठीक है, this is the again the signature which is a healthy one, but it is not crossed, it is just touched. So this is a total positive sign with no negative impact. ये पूरी कहानी जो हमने बताई उसके लिए, उसके पूरे ये सब चीजें हैं डिटेल। विकिपीडिया पे भी बहुत सारे 25-30 पेज छानने के बाद ये सब चीजें कॉपी पेस्ट करके हमने लगाई है, जो हमारे ट्रेड्स में दिख रही थी। तो कमिटेड सुसाइड का जो आ रहा है, द लेटर वाई एंड जी हैवी प्रेशर विद ब्लॉब एट एंड, दिस इज द सुसाइडल ट्रेड व्हिच इज reflected here. G and Y cheese, ये सभी में, सभी जगह G and Y, ये ब्लॉब आ रहा है आखिरी में। This is the societal case. And the hemochromatosis, ये ऐसा होता है, इसमें जो आपका जो लीवर होता है, लीवर इस टाइप का हो जाता है। दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल मेडिकल इंफॉर्मेशन विच यू कैन, इन केस ऑफ डाउट, यू कैन फर्दर रिलेट दिस इंफॉर्मेशन टू फॉर योर रिपोर्ट्स एंड ऑल। Emily Dickinson. Emily Dickinson is again a writer, but you see there is a gap between letters and the lines. Both are white space, disconnected letters, and more space between the lines. Considered an eccentric by locals, बहुत ही अजीब किस्म की थी, कभी भी जिंदगी में दरवाजे के अंदर ही रही, कभी भी निकलती भी नहीं थी, निकलती भी तो अकेले में निकलती थी। So loner. So the gaps shows the loner city. To even her own bedroom, Dickinson never married, and most friendship between her and others depend entirely upon correspondence. फोन करती थी और लेटर से लिखती थी। उनके जितने भी दोस्त थे, कभी फिजिकल दोस्त बनाएंगे। Emily Dickinson is a very good writer, but again यहाँ पे देखिए इनके दोस्त भी हैं, but again the gaps between the words are there.
So it means in the society, even though she has a good number of friends, but there is a distance maintained in the society. She never shows the, she never goes too close. She maintains his personal hygiene and secretiveness, more important. And even E, if you see, E is the left slant. The signature limited to leftward E, writing with similar writing and signatures both are different. It means वो जैसा पब्लिक में और पर्सनल दोनों सेम है. D has a gap in upper zone here. Certain large letters like A and S and O. Clear gap between words and lines. Erratic baseline. Space keep on the increasing towards right side. जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप लेटर्स के गैप बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ भी आप देखें S N O W. स्नो में आप देखें, यहाँ ड्रॉप में आप देखें लेटर्स के गैप बढ़ते जा रहे हैं. एंड यहाँ पर लेटर्स बढ़ने के साथ स्लांट भी वेरी हो रहा है. स्लांट भी सडनली, दिस इज ऑल सुसाइडल सॉर्ट ऑफ थिंग, डिप्रेशन. इवन डॉट्स में आते हैं, यहाँ दो पास में, इसके बाद फिर गैप बढ़ गया. तो इनएबिलिटी टू लिव फुल स्केल, अल्ट्रुइस्टिक पर्सन, गैप with mother. Male adjusted means again जो मैंने बताया था, in uneven gaps जो होते हैं male adjusted. Person become more and more aloof as he moved ahead in the life. This is the personality for the Emily Dickinson. Same Emily Dickinson, if you see the signatures are totally different. Has a more pressure and connectivity here. July 1967 came. Fully legible, rhythmic E middle zone prominence with lower hook micro middle zone and angular connections. जब भी micro middle zone होते हैं तो उस समय maturity अच्छी होती है and legibility है, मतलब connection उस समय देखिए connections भी हैं. जबकि पुराने वो के पहले वाले सिग्नेचर्स में लेजिबिलिटी भी नहीं थी और डिस्कनेक्शन भी था. यहाँ जैसे लेजिबिलिटी आई, कनेक्शंस भी आ गए अपने आप. बिकॉज यू आर क्वालिटी ओरिएंटेड एंड यू आर लिंक्ड विद पर्संस हैंड टू हैंड कनेक्शन में, तो कनेक्शंस भी आ गए. शॉर्ट क्लोज लूप वाई में जो लूप है लेफ्ट साइड जाना चाहिए, राइट में चला गया. Squeeze D with law. D में claw आ गया. So this is claw is again, but this is basically a charmer sort of thing. Person who has fantasies and charming personality, which for the opposite sex. Created own brand style of work, poetic, practical, troublesome, takes pain, aggressive, highly controlled accents, spendthrift. Low feeling and fatherly influenced. Low feeling for mother and fatherly influence. बिकॉज इनका मदर ई में आप देखें जो बुक्स बने हुए हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज बुक इज बेसिकली स्ट्रेस. सेम एमिली व्हेन ही further travels to the more depression, each letters are having a descending baseline. Each word with a large space and descents. Irregular, high pressure variations, so acute mental depression, mood swings and mental health issues. जब भी आपकी बेसलाइन एक सी नहीं होगी, ये टूटी टूटी बेसलाइन है, छोटी छोटी बेसलाइन है जो अलग अलग ग्रुप है जो डिसेंडिंग है, तो इट इज डिप्रेशन बेसिकली. Again, same Emily has a same Emily handwriting at a different stage. But here again, if you see, there is a connection, but there is a heavy pressure variations. Scribbling is there. So intermingle line with the wider angular connections. T crossbar above the stem. High erratic sudden spur of pressure. It means social intimacy spent
efforts in relationships, high, unreachable goals, unpredictable mood swings. So these are the things which this handwriting shows. Edward Dickinson. ये जो अलोफनेस उनके मदर से आई है, that her mother was regularly cold and aloof. Deepening menace of that जो डर है वो कहीं ना कहीं डेथ से जुड़ा हुआ है, कोई जिंदगी में ऐसी चीजें हुई उनसे. Melancholic. He talks to the visitor from the other side of doors. He is so secretive, so making the distance between them. We were never intimate while she was our mother. तो माँ के साथ कोई रिलेशन नहीं था, जो लूप्स बता रहे हैं वहाँ पे वो ट्रबल बता रहे हैं, वो ट्रबल बता रहे हैं. And she suffered with agoraphobia. So agoraphobia के जो बेसिक सिम्टम्स हैं और क्या चीज होती है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ. She suffered from agoraphobia. Now it comes to Eddie Murphy. Eddie Murphy is a very famous film personality. Here if you see E is forming, it is all ascending, but E, this is the initial stroke which I have shown in the first slide, first page. This is the initial stroke. From here the formation starts E. And the middle zone connection goes like that in a free and smoothly way. The larger E with initial stroke reducing finishing strokes due to intrusion into the next letter. जो M stroke है उसमें दूसरे लेटर्स अंदर आ गए, इंट्रूजन हो गया. पैराबोलिक स्ट्रोक्स यहाँ जितने भी आप ये कर्व दिख रहे हैं ये सब पैराबोलिक कर्व्स हैं. ये यहाँ भी है, M में भी आप देखिए पैराबोलिक, यहाँ पे दो कर्व्स आ गए. Parabolic curve is nothing but a sign of high undying energy. P, letter P without upper extension. Bottom sign stable pressure slant slash down. I dot legible. I dot की legibility है ये यहाँ पे. ठीक है, जो मैं बात कर रहा था ये I dot slash है, MP बड़ा हुआ है. Letter P without upper extension. P में upper extension नहीं. So he says, my mother and father broke up when I was 3. He died when I was 8. So I have a very dim memories of the parents. Letter P with higher size shows his struggle emotion about the father. And P is forming in a different stroke. It looks like a O connected to the Y. It doesn't look like it in one stroke. Emmanuel Macron, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं. अपनी जो टीचर थी बहुत उम्र की, उनसे मैरी किया उन्होंने. Married a teacher whose 3 children at the Jesuits de la provinces who later become his wife. तो इनकी जो रोल मॉडल है ई जो है देखिए उल्टा बना हुआ. रोल मॉडल रॉन्ग है, बहुत उल्टा जमाने से उलट करके इनने शादी करी. तो नॉर्मल जो ई का जो रॉन्ग्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, इनके उल्टे साइड में. तो दिस इज हाउ द थिंग्स reflected in the strokes. What person thinks, it is reflected in the stroke. It is a mirror image. He loves his teacher, but he same time because of mirror image, it means he has a fear for the new person which he doesn't like. So it is a sort of fear. So mirror image is nothing but a fear. At same time, he got his teacher relations very well, and he married
virtual practically. And again, the stroke which goes back, it means he takes care of the person, close person's friends very well. ये हमारे अरुण जेटली के भी आप सिग्नेचर में ऐसा ही था. Again, if you see, he has a total different set of, it is making in a two strokes. So because of his unusual relation, he is disturbed. He maintained his life with all challenges. Here he, again, if you see, it is the E made in a two strokes. So he considered the situation, and he, at some point of time, he's broken a hen. He has collected the things and formed his personality, not in one stroke, but in a jointed manner. Arin Brakovich. Arin Brakovich is a very activist. Basically, like a whistleblower, they have a high energy level. You just see the pen pressure up and down. Both pressures are very heavy and long initial stroke. It means the activists are basically a person who has a related to the ground realities. So that's what the stroke comes, goes below into the lower zone. The long initial stroke study heavy pressure performed E with scribbled rest of signature in contrast with the legibility family name. इनका आप देखिए फैमिली नेम में लेजिबिलिटी है, खुद के नाम में लेजिबिलिटी नहीं. It means he gives a lot of quality efforts for family, but lot of solution oriented and intelligence oriented efforts for self. Okay, this is how the personality, two different traits in the same personality, as emerging. With ascending baseline and high idols, together tells the writer is blessed with the drive, social goal inherited, wanted to enter prominently, yet gives more weightage to serve for social causes with higher goals and spiritual values. So this is how the personality of Erin Brockovich is a very famous activist, environmental activist basically. Elizabeth Warren is a leader. Here you see the top E is very squeezed, but it is like an antenna shop sort of thing. But it is not a hook basically. It is a cup saucer type of shape. So writing and signature similar. Micro medallion letters बहुत बारीक है. Connection equal to 1 to letter width. The connections जो हैं इनके garden connection थोड़े बड़े हैं, 2 letter के width के, which indicates the relation में ये ज़्यादा effort लगाते हैं. Legible white T cross bar ज़्यादा लंबा होता, तो it is a undisputed leadership का सबसे बड़ी quality है T cross bar, that too high T cross bar. Extended hand stroke circular dot, no family name. तो normally जो family name नहीं लगाते हैं वो self confident होते हैं, they don't depend on family or they don't they don't want to listen to the advice of family. हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी जो ITs में हैं बच्चे लोग वो हैं, अपना प्रोग्राम सीख के अपना करते हैं और अपना सिंगल उसमें रहते हैं. All this type of similar traits, they don't write the family name. So it is translated into altruistic persons, high IQ, matured person puts extra effort in maintaining relationships, well thought, balanced decision, and self-confidence. So this is how this personality has emerged out. Edmund Hillary, हमारे हिमालय में जाने वाले सबसे पहले पर्वतारोही थे. एडमंड हिलोरी, तेंजिंग नोर्गे एंड जॉन हार्ट, ये तीनों की टुकड़ी है, इनके सिग्नेचर एक साथ मिले हुए. अब एडमंड हिलोरी के आप देखें, अगेन ड्राइव बहुत ज़्यादा है, एंड वाई
राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में या वर्टिकल में होता है, राइट साइड में जा रहा है. So this gives the persons willing to go out, travel and take the stress, lot of stress. And again, more left means he takes care of the team. So that's why these are the traits which is suiting to the person who leads the team for winning the Mount Everest. Parabolic upper loop, E का, this is the energy level. Legible microzone, angular wide connections. एंगुलर कनेक्शन है एंड कनेक्शंस आर वाइड, जैसे ए एन इसमें आप देखिए लंबा लंबा, जबकि इसके नीचे वाले सिग्नेचर में देखिए कनेक्शंस आर वेरी मिनिमम, दे जस्ट touching each other, but here letters are fully spread, they have breathing space. Here there is no breathing space. Changing note change. While loop on deep left ends up to the extended stroke, flat top R. This is the main thing. The flat top R is basically a trait which gives you the person enjoys challenges. So the to go to the Himalayan, it is the biggest challenge. So this is how this challenge is reflected here and here. Camilo Aguinaldo is a leader, famous leader, first president of Philippines. You see, there is a whenever underline starts delayed, it means there is this is the start of person's life, childhood, and here it is the end of it. So whenever the underlines start delay and there is a gap, it means there is the person has no support. He is a self-made man. Okay? So, or you can say the success starts at the, this is, suppose this is the whole life, so this is 50%, so the, around 60%. So the success starts with the 70% of his lifetime. Okay. So culturally linked with name, forward slant, garland connections, signatures with E with one stroke, underscore and leftward triangular. So again, if you see this leader, actually it is ruled by German. So this fellow has created a lot of fight and he leads a lot of fight against the Germans. So his life goes 50% life spent on the fighting itself. So that is why there is the underline is not appearing in the stars. So it loves, so these all traits converted into the love, cultural, country traditions, strong bonding, proactive efforts, art drives, because slant है, टीम वर्कर जो भी कनेक्शंस है, हाई कमिटमेंट लेवल कनेक्टिविटी है, सेल्फ मेड पर्सन जो मैंने अभी बताया, ट्रेन टू टेक केयर ऑफ क्लोज पर्सन एज वेल. सेम एग्लो जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनकी शुरुआत में इनको बहुत तकलीफ हुई, बीमारी से गुजरे, उनके सिग्नेचर्स की आप देखें, और इन्हें बाद में थोड़ा सा गलत भी किया लोगों के साथ, एक्सप्लॉयटेशन भी किया, तो ऑल दोस आर रिफ्लेक्टेड इन हिज सिग्नेचर. लेटर ई देखिए चेंज हो गया, लॉट ऑफ बॉडी पेन एंड स्क्रिबिलिटी देयर, एंड डी इज अगेन गोज बैक लाइक दैट. अंडरलाइन वही है जैसे थी पहले, ये मैंने ब्लो अप करके दिया हुआ. But again, if you see, there is a sudden blobs are there, and here just in the G letter, if you see, there is a lot of blurs are there in the loops, and there is a again definitely total stroke is male aligned, and there is a hooks also. These are all negative traits for the and this fellow has died with some heart related diseases,
So those diseases I have just, what are the stages I have just captured here, process of arteriosis, because a lot of fats are jammed on the nerves. So how these fats are jammed and how they block the flow, it is clearly mentioned here. Eckhart Tolle, this fellow is a German religious leader, spiritual leader, self-help author. Re-emphasis of upper zone. Upper zone में आप देखिए connections ज़्यादा हैं and pointed हैं and loops are also there in that. So he has a natural urge to know about the situation, troubles, to look into that. And because of micro middle zone, he has the intellect and connectivity. So he able to collect the philosophy, and there is a drive is also there. So these are all things make him a good spiritual leader. Re-emphasis of upper zone, de-emphasis of middle zone are major graphic traits of spiritualism. Emma Goldman. सर, हाँ, ये नीचे के लाइन का हुक बोला जा सकता है क्या? आगे और पीछे दोनों जो है। ये फ्लरिशमेंट है। जब ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा ऐसा गोल घूमेगा ना, तो और हुक जैसा है, ये भी हुक है, बट यहाँ पे इसको हम फैलिक कर्व बोलेंगे, इसको हम फैलिक स्ट्रोक बोलेंगे। हुक जो मैं बोलूँगा, और बिकॉज ये कोई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर्स, सो it cannot be considered as a hook related to your personality. It is a baseline. So, and even this hook, if you consider the hook, it represents the base from the society. वहाँ पे जो problems हैं उसके लिए उन्हें अपना प्रवचन करते रहते हैं. So you are right that way. If you consider hook, it means that hook is stress for the society and all in which he lives. And right from the starting, he is like that only. This fellow is like that. If you go through the things, at the age of 13, he moved to Spain to live with his father, who did not insist that he attended the high school. So Tolle elected to study literature, astronomy, and languages. So all those things are just because of upper zone and all those things. This fellow has the same thing reflected in the writing. I think you got the answer. Yes sir, thank you so much sir. Okay. तो ईमा गोल्डमैन ये हुक है, जैसे ईमा में जैसे ये देखिए, दिस इज हुक, and this is knot, because it is it becomes a knot here. Hooks, knots, pick, jerk, blur, gaps, angle, sudden change in direction. These are all negative things. So E with starting and end stroke and pointed hook, close pack, first name and loosely placed letters. The Emma is a very tightly closed compared to the Goldman. Goldman, all the letters are comparatively relaxed. The gaps are more compared to Emma. Underscore ends leftwards down and with spiral bends transform into the painful childhood, because ये नीचे childhood का नीचे नॉर्मल रहता है, यहाँ पे नॉट बन गया. And troubled relation with father, more effort towards society, and undying spirit and energy for social cause. So because social cause में relaxation है, उसका underscores भी ज़्यादा जा रहा है, flourishment भी ज़्यादा है, efforts भी ज़्यादा जा रहे हैं. So this is undying efforts. This is how you can see the back of things. Now come to Erna Solberg. He is a leader, politician.
Just see the E is goes to the second E formation goes to very back, and it covers as a shelter for the other letters. It means the fellow has a tendency to serve as a leader, which has a lot of followers. Like in a shelter, a lot of persons are, can stand in the case of raining or heavy sunshine, and also like saving the things and capturing shelter sort of thing, creating a shelter shade of thing. So E is second stroke, second from middle it goes back like this. The same thing is not here in the surname, family name. So she has those things, not the family. So E lower goes back with sharp and accommodates rest of the letter of first name. Letter B, loop squeezed, G and stroke goes left. G ka and stroke goes left. Again, this is the same thing. He person takes care of his close friends and all. Here also same thing. So that's why he becomes an undisputed leader, because his friends, following and teams are, he takes care suitably. The people are there to follow him. So, and this states what I've written is ultimately culminated to inherited pain, full yet high energy filled persons can camouflage emotions. This like because if you see the two different style, basically it is the personality has a two different dimensions. So he can camouflage the same, and that is the camouflage emotions are nothing but a dyslexia. It is an indication of dyslexic disease. Heart wall related issues takes ultimate care of close. Heart wall related, basically if you see the letter B represents the heart. So letter B is a not normal, and there is a retracing loops, and the loop is become more flatter. So flatter becomes, it means the walls is, there is a problem in the walls. So this is how the letter B represents the heart, which we have already covered in the letter B. So dyslexia basically a slow learning sort of things, and these are the slow learning in the childhood. If you see, the speed is very slow, and the letter formation has a problem. So the letter size goes very, so N, E and N should be same size. It is a different size. Even when the E and N has same, it has a baseline variation, and W that changes. So these are the things is the person is not able to perform similar and study. So that is what the dyslexics is the sign, and these are the various. The person who has the dyslexia has a lot of visual problems. So this type of vision they have, blurry effect or halo effect or shaky effect. These are the effects a person goes through. So whenever you read the handwriting and do things, so you can these things can help you. You can ask, आपको दिखता कैसा है? आपको overlapping दिखती है, visual effect दिखता है. It is because of eyes and mental health issues. या seesaw आपको दिखता है, आपको same दिख रहा है, but उसको different दिखता है because of dyslexics. Evelyn Glennie. Just see, E is a 3 bar, 2 bar is there, first top bar, second bar, and third bar E makes from the loop itself, which is a phallic loop. Okay. To overflowing strokes with plasticity, forming cups, and the striking rod represent the sensitivity body skin. जब भी and listen to the music. She is a musician.
तो जब भी फ्लरिशमेंट इनकी हैंडराइटिंग देखिए, हैंडराइटिंग नॉर्मल साइज है, बट सिग्नेचर्स में फ्लरिशमेंट ज़्यादा है। जब भी फ्लरिशमेंट ज़्यादा होगा तो स्किन डिसीजेज होगी। इवन माइकल जैक्सन के सिग्नेचर भी आप देखें तो एम बहुत बड़ा है कंपेयर टू सिग्नेचर। तो जब भी स्किन डिसीज होगी तो आपके लेटर्स जो है फ्लोरिशेस कर होंगे। तो फ्लोरिश्ड स्ट्रोक इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग योर आउटर स्किन। Bugatti. Bugatti is basically an engineer who makes the Bugatti is a very famous car and all. You just see the person is very passionate. जब भी बंदा पैशनेट होता है, you can see the bonnet and the car is moving in the leftward direction like that. And the gap is clear, very, there is a gap, clear gap. And just like a gate and all, the first row and second row के बीच में. And the strokes are simply creating a part of body and moving direction in the leftward. So the passion is reflected in your handwriting and very quick and fast. So definitely just see from left you can see carbon and first and last part of carbon. So he is an engineer, he is a very famous designer of car. Eliel Saarinen is a very famous architect. Just see this Eddie Murphy and Eliel, both E are same. There is a creative and the architect definitely has a very strong presence and the horizontal strokes are there. It means that fellow wants to do physical thing and middle zone dominance भी हो रहा है. So this is the thing which makes him a successful architect because he is able to create his personality so wide, so simple, so creative. But rest of the letters, if you see, they are not so wide and so. It is the micro and the Saarinen, if you see the R basically, R is the flat top R. So he takes the challenges and he enjoys challenges. So E is a mixed cultural style with unique addition of phallic strokes together with microdome, with continuity and finishing strokes and upward. This has resulted into unique mix of old culture, high energy driven creative generating a theme with everlasting thirst of knowledge. This knowledge सर, is हैंड जो ऊपर जा रहा है उसका मीनिंग होगा क्या? ये जो hand stroke upper जा रहा है, that is the drive, that is the knowledge thirst, everlasting thirst of knowledge, which I have written here. This is the everlasting knowledge of thirst of knowledge. Now Edward Truffet. He is a accommodation. Here you see Edward, the upper E portion is a very sharp and middle zone is extended and very simplified and with lot of light pressure, so delicate basically. And there is a lot of scribbling. There is no middle zone is diluted basically. So this tells about the very high IQ level. So Edward 50. So simplified minimal letters, emphasis, extra wide T's crossbar, underline much below the signature. So the underline जितना नीचे होगा, it means that fellow has the gains height more. जिसका चिपका होगा पास में तो he gains the lesser height, lesser success, lesser level basically. This person has a very high level of success. And the light equal pressure is a delicate sort of thing. So makes him delicate yet precise intellectual solution with lot of consideration. Because there is no continuity. When continuity breaks and there is a logical break, it requires for to switch over one letter to other. When there is a natural break, it it is considered as a consideration.
I think with this it ends. I have tried new ways and to give the more things with more holistic presentation for personality, so that graphology goes with along everything, not a individual. And if we know such type of more things, then it becomes a report, and it gives you authentication and validity. Any question? Yes, sir. Excellent session. We have to practice more. Excellent session, sir. Thank you so much, sir. Enjoyed a lot, sir. Thank you so much. So much knowledge we got this time. Go analyze. I also go to Wikipedia and learn, connect his life events and the trades and all. So I just connect and I got educated actually. सर हम लोग भी आपके लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे. नेक्स्ट सिग्नेचर जो एफ रहेगा उसके लिए भी हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट करके आपको पसंद बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी दे दिया, मैं 15 दिन में देने वाला हूँ. आप एफ के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लर्निंग, अभी देखिए एफ तक मैंने बेसिक्स आपको सबको बता दिया. मैं कुछ छोड़ता नहीं, कुछ चीज छुपा के नहीं रखी. तो आपको पता ही हुआ, जोन है, चक्रा सिस्टम है, बेसिक ट्रेड्स हैं, वही चीज आपको देखना है, उसको कनेक्ट कर देना है, दैट्स ऑल. और कुछ चीज समझ में नहीं आती तो हम फिर हैं आपके लिए. एनडीटीवी 24/7 आप कभी भी पूछेंगे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ. थैंक यू सर. हाँ मेरा राम सर, थैंक यू सो मच सर. हाँ चलिए. सपना तुम पहली बार अटेंड कर रहे हो? जी सर. So nice approach, good approach towards graphology. अच्छा लगा लेक्चर बहुत. मुनीरा जी, आपने कुछ बोला नहीं, आप बीच में चले गए थे. मुनीरा इज नॉट देयर. जी चलिए. कैसा लगा आपको? है तो दे दीजिए हमारे ग्रुप में. क्वेश्चन के बाद हमारे ग्रुप में डाल दीजिए. थैंक यू.